Hello guys, welcome back to another live stream and today we are going to play Genshin Impact और आज हम लोग आर्कॉन क्वेस्ट कंटिन्यू करेंगे। लेट्स होप आज हम लोग साइड ट्रैक ना करें और आर्कॉन क्वेस्ट लिटरली कंटिन्यू करें स्ट्रीम पे, ठीक है। तो आसपास के चोर आज नहीं करने की कोशिश करेंगे पहले आर्कॉन क्वेस्ट के कुछ पार्ट्स खत्म करने की, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग आर्कॉन क्वेस्ट। एंड उसके अलावा गाइज आप लोगों को चैट पढ़ के आप लोगों से बातचीत करते हुए इस स्ट्रीम को एंजॉय करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर आने इन। जितने बंदे स्ट्रीम पे आए हो गाइस लाइक कर दो गाइस स्ट्रीम को। जितने बंदे स्ट्रीम पे न्यू है गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम, लेट्स जंप इनटू द गेम एंड चलते सबसे पहले आप लोग चैट पढ़ते हैं एंड उसके बाद जाएंगे गेम के अंदर एंड कमीशन से गेम को चालू करेंगे। तो हमें दिख रहा है सबसे पहले आज स्ट्रीम पे फ्रैगर आया है, तो हेलो फ्रैगर, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो सुभाजीज, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो हरिसा, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो विश्वा, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो डाउन गेमर, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो धीराज, वेलकम टू द स्ट्रीम। आज कोई डोमेन करोगे आप? डोमेन सोचूंगा मैं, अभी अभी सोचा नहीं है क्या करूँगा। मेरे को फिशल के लिए आर्टिफैक्ट फार्मिंग चालू करनी है एक्चुअली, यू नो मैंने अभी तक, लेकिन डोमेन मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे आर्टिफैक्ट का, यहाँ पे एंड खोला नहीं है अभी तक, तो मेरे को श्योर नहीं है। अगर मैं करूँगा तो फिशल करूँगा, नहीं तो हो सकता है मैं ये क्या कहते हैं क्रिम्सन विच वाला डोमेन करूँगा टू टू फार्म आर्टिफैक्ट्स फॉर हूताओ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से रखी हुई है हूताओ लेवल 90। ओके, सो प्रॉबेबली इन दोनों में से एक ही होगा, अगर होगा तो। लेट मी सी। मैं भी आ रहा कॉम्स के लिए, मैंने बुलाया नहीं फ्रैगर, नहीं बुलाया मैंने फ्रैगर कॉम्स के लिए। मैं आ रहा कॉम्स के लिए, मैंने नहीं बुलाया तुमको धीरज कॉम्स के लिए। लेकिन गेम काफ़ी स्मूथ एंड फास्ट हो गई है आजकल। गेम स्मूथ हाँ हो गई है, लेकिन थोड़ी कहीं किसी किसी एरिया में डाउनग्रेड भी हो गई है, मेरे को ऐसा लगता है धीरज, पता है गेम थोड़ी सी। एंड हर डिवाइस अभी चला नहीं पा रही है। जैसे सुबह देखा कि ओमकार के डिवाइस ने एक्चुअली हक दिया, रेंडर नहीं हो पाई चीज़ें, तो थोड़ी अजीब से दिख रही थी उसके ओमकार के डिवाइस में। सो वैसा इशू है गेम के अंदर। एंड आई स्टिल बिलीव कि कि हो तो गई है गेम स्मूथ, लेकिन मोबाइल वालों के लिए चले वो वही बड़ी बात है, यू नो। पीसी वाले तो चला ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। साला मेरे पास 12 फ्लूट हो गई हैं, तो बजा ले उसको डाउन गेमर, एक एक के आगे एक लगा के, बस। तो और क्या, यही तो बचा है जिंदगी में। एनीवन बफरिंग? देयर इज नो बफरिंग इन द स्ट्रीम धीरज, चिंता मत करो। अगर होगी तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। देयर वॉज नो बफरिंग फ्रॉम माई एंड। तुम्हारे नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, बफरिंग तो हो रहा होगा। मेरे साइड से कोई बफरिंग नहीं है। पाइमन के मुंह पे मीटेोराइट लगने वाला है। मैं तो फिशल कर रहा, एक डिसेंट फेदर मिला है बस। अरे कॉम्स करके चला जाऊंगा, ले लो ना। नहीं फ्रैगर, नहीं नहीं, अपना अपना करो, अपना अपना। हेलो एलिमेंटलेस, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है? बढ़िया हाल चाल है एलिमेंटलेस, तुम्हारे कैसे हाल चाल है? मेरे को भी करना है एंड रेजिन ऑल्सो। ऐसा थोड़ी होता है धीरज, हमने तो बुलाया नहीं है। पाइमन मीट बॉल को चाट क्यों रही है? उसको मजा आ रहा है मीट बॉल चाटने में, क्यों? उसको सेहत लगा हो सकता है ना भाई। तू भी चेक कर ले एक बार फ्रैगर मीट बॉल खा के। भाई राइडन कब आएगी? राइडन अभी नहीं आ रही है डाउन गेमर, अभी राइडन का बैनर डिले हो गया है, सो नॉट श्योर कब आएगी। फोन में जितना लैक ऑफ ऑप्शंस हैं, ऐसा लगता है दे डिडंट थिंक एट द स्टार्ट टू मेक फोन वर्जन। नो, उन्होंने सोचा होगा, लेकिन देर इज अ लिमिटेशन एंड दे वांटेड टू मेक अ गेम इन सच अ वे कि हर एक मोबाइल एक्चुअली गेम को चला ले। भले ही स्पेस का प्रॉब्लम उनकी दिक्कत है कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, बट वो ये चाहते थे बेसिकली बेस लेवल पे कि हर एक फोन में चलना चाहिए गेम, यू नो। जितने ज़्यादा फोन में चलेगा गेम और जितना क्लैरिटी से देखेगा, उतना ज़्यादा उनके गेम की रीच रहेगी, ठीक है। तो हो सकता है फोन में कुछ ऑप्शन नहीं दिए, कुछ पीसी में दिए हैं। जैसे तुम लोग को भाई 120 और 90 एफपीएस का ऑप्शन है, 240 एफपीएस के भी ऑप्शन है, हमारे में नहीं है। 60 एफपीएस इज द मिनिमम फॉर अस एंड उसके अलावा बाकी सेटिंग्स हैं विच वी कैन डू एक्चुअली फ्रॉम अवर एंड। सुजा भाई ले लो ना। नहीं लेना ना हमको धीरज। ये कौन आ रहा है ऊपर रिक्वेस्ट से? मैं भी वही देख रहा हूँ, मैं भगाऊंगा उसको जो आ रहा है। फ्रेंड रिक्वेस्ट से डिलीट करेगा मैं उसको जो परेशान कर रहा है। वो वाला डिया से डोमेन करने गया था, कोई डोमेन को ही
एक सेकंड, वो वाला डिया से डोमेन करने गया, कोई डोमेन हो ही नहीं पा रहा। उससे अच्छा तो जब डिया थी तब डोमेन में मेरे बिना कर तो लेता था। अरे जुगनू तूने बिल्ड थोड़ी किया अभी, 90 नहीं किया न, वो किया है क्या कहते हैं, बिल्ड नहीं किया करेक्टर। बिल्ड कर पहले, वो उसको 90 कर, फिर उसके बाद होगा ना ऐसे डोमेन। ऐसे थोड़ी होता है अपने आप डोमेन हो जाए जुगनू, तो बिल्ड करना पड़ता है करेक्टर। एंड वेलकम टू द स्ट्रीम जुगनू। सुजा भाई अपना इन गेम एवेटार चेंज करो ना, अब बोर हो गया हूँ इसको देखकर। नहीं मेरे को ये अच्छी लगता है एवेटार, इसलिए मैं यही रखेगा, डाउन गेमर, दैट इज माय लॉब। 120 या 90 एफपीएस में इवन आईपैड कांट रन स्मूथली। मैसेज किसका पढ़ते नाम किसका लेते हो, क्या बोल रहा है सुभाषिस? तूने ही तो लिखा है कि सुजा भाई ले लो ना, तूने ही तो लिखा है ऊपर, ध्यान से देख सुभाषिस, मेरे को दिख रही है चैट, तूने उसके ऊपर डिलीट की है एक चैट, और उसकी डिलीट और तेरे चैट के बीच में एलिमेंटलिस्ट की चैट है। सो मैं पढ़ा सही हूँ सुभाषिस, तो तेरी गलती है। 60 एफपीएस ही अच्छा है। नहीं वो चला लेता होगा, फ्रैगर शायद 90 एफपीएस पे खेलता है मेरे हिसाब से धीरज। चला देखो, डिवाइस में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, चला तो आदमी लेगा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से धीरज। मेरा तो 300 एफपीएस पे भी सही चलती है। बिल्ड कर रहा है, कल कर दिया एक दिन में कैसे बिल्ड कर दिया बे जुगनू? डोमेन आए तो 4 दिन नहीं हुआ, तू एक दिन में कैसे बिल्ड कर लिया बे जुगनू? कौन सा नशा क्या फूका है बे कि एक दिन में बिल्ड कर लिया तूने अपना वो लैनी? मैं अभी तो देखूं जरा कैसे बिल्ड किया है। मैं भी तेरे रुक, एक दिन अकाउंट में जाएगा, मैं देखेगा कैसा बिल्ड किया तूने लैनी को, मैं भी देखूं तेरा बिल्ड क्या है लैनी का। आपने आपने मेरा नाम लिया था वट है, क्या बात कर रहा है? मैंने सुभाषिस नहीं बोला था, धीरज बोला था क्या? वैसे मैंने देखा वत्स ने ऑलरेडी कॉम्स कर लिया है लेकिन कलेक्ट नहीं किया रिवॉर्ड। आर्कॉन क्वेस्ट सीम्स गुड बट लॉन्ग। ऑब्वियसली अच्छी बात है ना एलिमेंट लिस्ट, जितना लंबा आर्कॉन क्वेस्ट उतने ज्यादा प्रीमोस और उतना ज्यादा फन आपको मिलेगा। ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाए सब, ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी लाइक एक दो वीक तक खींच पाए, जिसको पता है एलिमेंट लिस्ट हमारे लिए अच्छा है एटलीस्ट ये चीज। बस 65 लेवल्स का है, बाकी आर्टिफैक्ट वेपन टैलेंट लेवल अप हैं। मैं नहीं मानता जुगनू एक दिन में बिल्ड कर लिया तूने, ऐसा हो सकता है किसी के आर्टिफैक्ट छीन के लगा दिए होंगे, वो बात अलग है, वो टट्टी आर्टिफैक्ट लगा के वो भी, लेकिन मैं नहीं मानता कि तूने लाइक ऑलरेडी लैनी बिल्ड कर लिया। लैनी तभी बिल्ड होगा जब उसका आर्टिफैक्ट तू फार्म करेगा जुगनू, जो नया डोमेन आया उसमें ना। भाई मेरा 60 एफपीएस है, हाँ धीरज। लॉन्ग द बेटर, यस इट्स द लॉन्ग इज द बेटर। चलो गाइज, जिन्होंने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइज, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे रहे। एंड एज ऑलवेज गाइज आफ्टर 25 लाइक्स आई विल डू द अकाउंट रिव्यू एंड आई विल टेल यू गाइज ऑन द चैट कि अपने अपनी आईडी दे दो तो मैं अकाउंट रिव्यू कर दूंगा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके आर्कॉन को ऐसे। एंड उसके अलावा गाइज चलते हैं अभी कमीशन करने हम लोग, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि हमको आर्कॉन क्वेस्ट भी कंटिन्यू करना है। कल कुछ कर नहीं पाए थे आसपास के बकचोदियाँ करते करते। नहीं मेरा खराब होंगे धीरज, सूझा भाई कहाँ कुछ गलत सुनते हैं। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही करता, वरना जल्दी जल्दी मजा नहीं ले पाता स्किप के चक्कर में। हाँ एग्जैक्टली एलिमेंटलेस स्किप में मजा नहीं है भाई, बिल्कुल मजा नहीं है स्किप में। एंड मैंने अभी नोटिस किया एक्चुअली यहाँ पे जो ये फाउंटेन का सबसे पहला जो टेलीपोर्टर है ना तुम्हारा ये वाला, यहाँ पे पता है सॉन्ग बहुत सही है, लाइक बहुत चिल सॉन्ग है, बहुत काम साउंड है, एंड लाइक मजा आ रहा है, मतलब इस गाने यहाँ पे इस म्यूजिक को सुन के फील आ रही है अलग सी फॉर सम रीजन। तो मेरे हिसाब से काफी सही है भाई ये वाला एरिया, लेकिन जिसको अगर चिल करना है तो यहाँ खड़े रहो, गाना ही बैकग्राउंड में ऐसे बजता रहेगा प्यारा सा, और लाइक अपना काम करते रहो जिसको चिल करना है। बहुत प्यारा मस्त सॉन्ग है। मेरे को कुछ टिप्स दो। आई रिमूव्ड यानफे डिया और नहिडा फ्रॉम माय टीम बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। व्हाई डिड यू रिमूव्ड नहिडा दो डाउन गेमर? नहिडा नहीं रिमूव करनी चाहिए थी। यानफे को कर सकते रहे, और यानफे को नहीं करते चलता भी, यानफे के साथ सिंगशो इस्तेमाल करनी थी तुमको टू बी ऑनेस्ट। कौन है भैया लूफी? चलो निकलो। तो जब मेरे को डेजर्ट भी बैकग्राउंड है सेटअप,
में मजा आज देखा। क्या बात कर रहे हो? सो मेरे को डेजर्ट है क्या सेटअप में? मैंने ध्यान नहीं दिया। वेट है, वेट तो जंगल वाला एरिया नहीं आता है यहाँ पे सेटअप पे, ऐसा मतलब? रुको जंगल वाले एरिया में जाके देखेंगे सेटअप वाला। अरे आजा, धीरे मजाक कर रहा हूँ मैं, तो सीरियस ही हो गया। नेक्स्ट बैनर किसका है? नेक्स्ट बैनर निवलेटे और वर्सली का है, उसके साथ हुताओ बोल रहे हैं कुछ लोग, नॉट श्योर चौथा कैरेक्टर एलिमेंटलेस। अच्छा तुम नेक्स्ट फेस का पूछ रहे हो क्या? नेक्स्ट फेस का तो जोंगली और चाइल्ड है ना। नेक्स्ट फेस तो जोंगली एंड चाइल्ड है। कंफ्यूज कर दिया तूने एलिमेंटलेस मुझे। अरे सुजा भाई हेलो हेलो वत्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या बात है वत्स, जिंदा हो हैं? गान्यू मैं एनिमी को फ्रीज कर सकते हैं तो एनिमी कम से कम डैमेज तो नहीं कर पाते, उसके नल्ले बन्नी डैमेज के मुंह पे फेंक के मारो तो भी वो मुझे मारने पे लगते हैं रहते हैं और बार बार इंटरप्ट होता है। बहुत छोटी ड्यूरेशन है एक्चुअली उसकी। पता है इन्होंने लैनी के किट में कुछ अच्छा नहीं किया है। मतलब उसके लैनी के डॉल को ना इन्होंने वो टॉन्ट दिया है, एनिमीज को टॉन्टिंग दिया, लेकिन दैट हैज अ सेपरेट ड्यूरेशन, एक सर्टेन ड्यूरेशन, एंड एज वेल एज कूल डाउन भी बहुत लंबा है उस टॉन्ट का, तो और ड्यूरेशन भी बहुत छोटी है टॉन्ट की, तो बहुत गंदा है। आई नो जुगनू, बट एक बार हाथ बैठ जाएगा तुमको पता चल जाएगा कैसे यूज करना, तो यू कैन इजीली यूज लैनी मेरे हिसाब से। हाँ तो नेक्स्ट बैनर जोंगली है ना, तुम्हारा चाइल्ड है। तो जब भाई नेवलेटर पुल करेंगे, हाँ बस तुम्हारे अकाउंट में करते हैं ना हम, चिंता क्यों कर रहे हो? Why we get teleported so from Statue of Seven of Furina, सबसे पहले वाला है। Why we get teleported so from the Statue of Seven of Furina, सबसे पहले वाला समझा नहीं मैं सुभाषिस। My team is currently Kaya, Singshon, Aida, Dia. Now tell me, should I remove Dia or get Yanfei? कर सकते हो डाउन गेमर, आई गेस Dia रिमूव करके यानफे कर सकते हो तुम मेरे हिसाब से, नहीं तो Dia ही रखो। लेकिन Dia सिंगशो के साथ वर्क नहीं करती है, बस यही प्रॉब्लम है डाउन गेमर। यानफे इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू देयर। काया को हटा के उल्टा Dia रख सकते हो टीम में, काया को बाहर बैठा सकते हो, काया को सेपरेटली यूज कर सकते हो तुम। बेंटी में भी नहीं, बेंटी नहीं आएगा लिमिटलेस। योर डेविस वेलकम टू द स्ट्रीम। एलान पे विशेष पूरी नहीं हुई थी, अब मैं हाइड्रो आर्कन का बदला निकालूंगा, करा के मेरा पुल्स मेरा इंतकाम देखेगी। लैनी तो ट्रायल में बेकार लगा, Dia में मजा तो आया था। एग्जैक्टली Dia फन है एक्चुअली थोड़ी सी, दूसरे साइड ही टीपी कर देते हैं। हाँ तो भाई वो तुमको अगर ये बताओ कैरावेन रिवाज से उस टीपी तक चलते हुए दिखाएंगे तुमको सुभाषिस, तो तुमको ये नहीं लगेगा भैंस की कब बैठ के 15 मिनट, मतलब हम ये ट्रैवलर को चलते हुए देखना है यहाँ से कैरावेन रिवाज से वो टेलीपोर्टर तक, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा तुमको? इसलिए वो टेलीपोर्ट कराते हैं सुभाषिस। 12 के 20 के मार देता है एक स्टैक से 5 स्टैक में। हाँ तो जुगनू डैमेज करता है लैनी, ऐसा नहीं है डैमेज नहीं करता है, बट ड्यूरेशन टॉन्ट की बहुत छोटी है, प्लस डैमेज का जो है ना नंबर्स एक बार का बड़ा है, वन टाइम डैमेज है वो, दैट्स नॉट अ कांस्टेंट डैमेज जिस पे तुम वर्क कर सको। सो बहुत अजीब है लैनी। मोना का बिल्ड बताना। क्यों मोना मिल गई क्या डेविस तुमको? डेविस तू कुछ मत कर, प्रिंटर ले ले, मोना की फोटो प्रिंट कर, उससे देख ले बस। देख डेविस तेरे को ज्ञान दे रहा है डाउन गेमर, देख डेविस। आई लाइक Dia अल्ट एनिमेशन एंड डायलॉग्स। अरे वो नहीं, फिर कौन सा वाला? मुझे क्या पता किसकी बात कर रहा है तू? नहीं आना क्या तेरे को धीरज, मतलब कमीशन करने में वेट कर रहा था यार। चल कोई नहीं, मत आ, मैं ही कर लेगा कमीशन। नहीं आ रहा तो अब मैं वेट नहीं करेगा, मैं काफी देर रुक लिया। कहाँ गई बे टीम मेरी? एक सेकेंड, उंगा बुंगा टीम कहाँ गई मेरी? एक सेकेंड, वेयर इज माई टीम? उंगा बुंगा वन आ जाओ। This
blinding sunlight is such a pain. मेरा नेट No way I can बीटी get a दे रहा है nap in भाई this घर weather. पे। तुम उसको दे दो बीटी, फिर एक काम करो बस। मैं नहीं पढ़ता डाउन गेमर की मैसेज। पढ़ लिया करो, ये डेविस का भी इज्जत दे दिया कर दो यार, तुमको भी इज्जत मिलेगी। मतलब फुरीना का सबसे पहले वाला स्टैचू पे जाके देखना। Navigating the वो world is a डेजर्ट पे जो whole lot है easier सुबह with a से, few वो different डेजर्ट वाला identities to फुरीना choose का है from. क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया Need है। me to come up with some for you? वो डेजर्ट वाले की बात कर रहा है क्या? वो फुरीना का है क्या स्टैचू? मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली वो स्टैचू पे उतना। आई गेस 4 पीस एम्बलम दे सकता है डेविस। अगर मोना से डैमेज करना है तो फिर वो कर, क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ डेप्थ कर, नहीं तो M4 पीस एम्बलम पे बिल्ड कर VTTDS। और ER एटलीस्ट 240 समथिंग रखना डेविस, 240 250। मेरा C1 है मोना, तो कोई बिल्ड बता दो। मेरे को याद नहीं है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मेरे कि सबसे पहला स्टैचू फुरीना का है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया है एक्चुअली। गया था लास्ट टाइम, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, स्टैचू ध्यान नहीं दिया मैं, क्योंकि सीनरी एंजॉय कर रहा था। The wind knows me. Busted. Time to go. One with nature. लेट मी सी अगला कहाँ है कमीशन। फॉरेस्ट में है, चलो देखते हैं यहाँ पे चेंज होता है कि नहीं होता है। अभी तो मैं एलान ट्राई कर रहा हूँ कहीं 50-50 मिल जाए, क्योंकि आया का टीम के लिए राइडन या हुताओ के लिए भी एक हाइड्रो चाहिए है। This isn't good. If the rain washes away the traces, मतलब it's तू gonna set us अपने back a अपने long way. कर्स्ट अकाउंट पे लेके ही मानेगा, मतलब है जुगनू, क्या कहते हैं एलान। ऐसा नहीं मतलब कर्स्ट वाले कैरेक्टर ले, नहीं नहीं नहीं, जुगनू को फिर भी एलान चाहिए है। हाँ बे, This blinding sunlight is such a pain. No way I can get a nap in this weather. अबे हाँ बे, पता है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो एनवायरनमेंट के साथ तुम्हारा बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। आई गेस सुरुमी में भी डिफरेंट आएगा फिर, या इकोनॉमिया में डिफरेंट आएगा तुम्हारा, मेरे को If ऐसा the लगता rain है। washes away the traces, it's gonna set us back a long way. यार मैं हमेशा पहली ट्राई में कर लेता हूँ ये चीज़, पता है हक गया ये कोऑप के चक्कर में। उसने रजिस्टर ही नहीं किया मेरा पिक। ये हर बार मैं पहले ट्राई में पकड़ लेता हूँ, पता है। कोऑप में क्या होता है, कोऑप में इसका पिंग लो है ना धीरज का, तो ये रजिस्टर नहीं लेता है मेरा लाइक देखिए इसने टाइम लिया थोड़ा सा, ये क्या कहते हैं, ये जेलीफिश को रजिस्टर करने में, इसकी वजह से मिस हो गया पूरा, हमको यहाँ चल के आना पड़ा। नहीं तो पहली ट्राई में हमेशा ले लेता हूँ मैं ये चीज। यहाँ पे यो शशि, वेलकम टू द स्ट्रीम। अरे शशि तू खेल नहीं रहा यार गेम, कैसे हो शशि भाई? डाउन गेमर काम कर, जो एडवाइस मुझे दिया वो तो उसकी कर। वैसे सुजा भाई आज एलान 57 के मारी। अच्छा बस, अच्छा तो हम क्या करें बस। वैसे सुजा भाई आज एलान, अरे वो एक आइडलॉन का पप्पा ने 1 शॉट कर दिया मेरे कैरेक्टर को ओपन वर्ल्ड में, इवन कोको के 2K पे कर दिया है। किसने तेरे को 1 शॉट कर दिया? नाम बता उसका, नाम बता साढ़े का, कौन है ये 1 शॉट जिसने किया तेरे को? कौन है ये? मैं भी मिलके आएगा उससे, कौन है ये तेरा 1 शॉट करने वाला आइडलॉन का पप्पा? वैसे शशि तू खेल नहीं रहा गेम क्या? एक सेकंड रुक, देखना तो शशि खेल रहा है कि नहीं खेल रहा गेम, या बंदी करके बैठा है। अभी भी नहीं खोला बंदे ने गेम। भाई कैसे नहीं खोला शशि? तेरा मन कैसे नहीं कर रहा? हाथ क्यों नहीं मचल रहा है तेरे? गेम खोलने का मन क्यों नहीं कर रहा तेरा शशि? मेरे को ये जानना है। डाउन गेमर एक
धीरज इतने अच्छे पिंग क्यों हैं? बताऊंगा, कमीशन करो। कस्ट अकाउंट है, गंदे कैरेक्टर की है, गारंटी में निकाल रहे हैं। अच्छे तो कहीं से चाहिए, नहीं तो आर्कन क्वेस्ट में ही अटक जाऊंगा। हाँ इसके बाद का वो करेंगे, रेजन करेंगे, रेजन रन करेंगे। जुगनू चल निकाल ले, मेरे को लगा भाई मतलब गंदे कैरेक्टर से भी आर्कन क्वेस्ट की जा सकती है मेरे हिसाब से जुगनू, बट ठीक है अगर तुम्हारा इतना स्ट्रगल है तो फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब अब हमारे पास बचा नहीं कुछ बोलने के लिए। बट जोंगली एंड कोको मिलकर मार दिए। आई गेस सील्ड विल बी इम्पोर्टेंट इन दिस रीजन। सील्ड विल बी इम्पोर्टेंट फॉर एनिमीज, नॉट फॉर अस। Me taking sannyas from Genshin. For how much time, Sasi? For how many days? Fallen leaves, adorn my night. Take it easy. Gotcha. ये देखा मेरा यलान की स्किल भी लेट रजिस्टर हुई क्योंकि हम मैं कोऑप में हूँ। एक सेकंड देना मेरे को, फिर पिंग वो एग्जिट लैग लगाने देना ताकि पिंग रिड्यूस कर सकूँ मैं अपनी। एक्चुअली जब मैं स्पाइरल अबिस करता हूँ तभी लगाता हूँ, ये नहीं तो नहीं लगाता हूँ मैं। अब लगाना ही पड़ेगा लेकिन। गाइस लाइक कर दो गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक स्ट्रीम को, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम बनाए हैं। आई कैन सी 20 लाइक्स बहुत जल्दी पहुंच गए, क्या बात है स्ट्रीम पे। धन्यवाद गाइस जिन्होंने भी लाइक किए हैं स्ट्रीम को। बट डिलीट कर दिया ऑलरेडी जेंसन। अबे तो डिलीट तो कर दिया ससी, लेकिन इंस्टॉल भी तो कर सकता है वापस। मैं ये पूछ रहा हूँ कब करेगा ससी? बिना जोंगली के हरा तो मान जाऊंगा आपको। क्या हमको ऑलरेडी नहीं मानते? सुबह से हम स्पाइरल अबिस करके आते हैं इतना लंबा, मतलब हम चूतिए हैं कि इतना लंबा स्पाइरल अबिस करके आते हैं, मतलब फ्लोट 12-3 करके आते हैं बिना जोंगली के हर बार हैं। अब बोल रहा हूँ मान जाऊंगा है, अब वो स्पाइरल अबिस करके आ गया आदमी तब तो मान ही जाना चाहिए आदमी को मेरे हिसाब से। सहक रुकोगे क्या? 5 और लाइक हो जाते स्ट्रीम पे, फिर मैं सबके साथ ही कर देता हूँ आपका। फॉर हाउ मेनी मिनट्स पोचो? हाउ मेनी मिनट्स पोचो? सच मेरा एक्सपायर हो गया एक्चुअली। हम सच छोड़ो, इसी पिंग पे करना पड़ेगा आई गेस आज हमको। धीरज चलो एक सेकंड रुको, कैथरीन से हम बात नहीं कर पाएंगे ना कि स्कोप में। it's harder than that bro, it's harder than there is no way something can be harder than spiral abyss। इतना हार्ड तो एजडा भी नहीं होता है, मतलब इतना हार्ड तो एजडा भी नहीं होता है। मतलब एक स्पाइरल अबिस तो मैंने टोटली विदाउट जोंगली किया था, उसमें एक साइड गान्यू भी थी। वही तो बोल रहा हूँ, देखो ना सर स्पाइरल अबिस हम लोग करते हैं, फ्लोर 12 करते हैं, मतलब आदमी मानते ही नहीं है भाई हम लोग को। भाई एग्जिट ही नहीं करने दे रहा कोऑप से, वाह अटका दिया मुझे कोऑप में। आज हमारे लिए देख लेना 2 मिनट का बिल्ड। ओके हेलो बुरा बनी, वेलकम टू द स्ट्रीम। 12 लाइक कर दिए और 5 का वेट करना पड़ेगा। हाँ 5 जस्ट 5 ही का तो वेट करना है, सर हो जाएंगे अभी। मैं निकाल चुका हूँ फ्रॉम इनाजुमा टू फाउंटेन्स। मैं निकल चुका हूँ फ्रॉम इनाजुमा टू फाउंटेन्स। क्या डाउन गेमर? हांगकांग सर्वर में आ जाओ, अच्छी पिंग आएगी। मेरे तो यूरोप में भी अच्छी पिंग आती है, एशिया में ही नहीं आती। भैंस की आंख, मैं रहता ही एशिया में हूँ लेकिन आती यूरोप में पिंग है। बताओ कितनी गलत बात है ये। मतलब बहुत ज्यादा गलत बात नहीं है ये कि मतलब मैं एशिया में रहता हूँ, मेरे को एशिया में पिंग अच्छी नहीं आती है, वो यूरोप में पिंग अच्छी आ रही है। गान्यू का टॉन्ट बहुत काम का आता है अब इसमें, आई नो। वैसे शशि अकाउंट दे, मैं तेरे अकाउंट में लैनी पुल कर देता। शशि तेरे पास प्रीमोस होंगे ही ऑलरेडी शशि तेरे अकाउंट में। अकाउंट दे, मैं तेरे अकाउंट में वो कर देता हूँ, लैनी पुल कर देता हूँ।
उस दिन आया नहीं वैसे, जिस दिन हम कैरेक्टर्स पुल कर रहे थे लोगों के अकाउंट में, तुम शशि स्किप कर दिए तूने, उस दिन कर दिए। बहुत मजा आया पता है शशि, सारे 50 जीता, एक भी नहीं हारा मैं। एक लाइन से ऐलान दिया लोगों को, फ्रॉम ल्यूए आई एम गोइंग टू फाउंटेन टू ओपन स्टैचू ऑफ 7। चलते जाओ डाउन गेमर, चलते जाओ, उसको सुमेरु से फर्क नहीं पड़ता। फ्रैगर, फाउंटेन इज वे बिग फॉर हिम एंड वे मोर इम्पोर्टेंट। हाँ रेजन करने ही जा रहा हूँ धीरज, मेरे को देखना पहले डोमेन है कहाँ पे। मेरे को 2 डोमेन दिख रहा है, एक यहाँ पे है, सीम्स लाइक अ टैलेंट डोमेन टू मी। ये वाला कौन सा है? ये आर्टिफैक्ट डोमेन है, ये खोलना है मुझे। हेलो अमान, वेलकम टू द स्ट्रीम। सुजा भाई 4.1 में बहुत प्रेम मिलते हैं, वो तो मिलेंगे ही ऑब्वियसली। फ्रैगर मैप पे पा सकता है 4.1 में, यू नो, तो मिल सकता है ऑब्वियसली। पहले उससे फाइट करो, बदला लो मेरा। अरे सुबह से अभी मेरा कुछ खुला नहीं है, पहले खोल तो लेंदे कुछ, तब तो फाइट करूंगा मैं, बदला तेरा निकालूंगा, चिंता मत कर। तेरा बदला पूरा निकालेगा मैं, चिंता मत कर, गिन गिन के बदला लेगा मैं उससे। उनके लिए ऐसे सर्वर में इंडिया पाक आते हैं कहाँ हैं? हाँ एग्जैक्टली, आते ही नहीं है उनके लिए, पता नहीं है उनकी प्रॉब्लम है या आईएसपी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आईएसपी की प्रॉब्लम होगी। वैसे टोक्यो में जाके कौन रखता है सर्वर एशिया का? मेरे को ये जानना है। जेंसन वालों का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, टोक्यो में जाके सर्वर रखे हैं इन्होंने। ट्रेन से जा सकते हो डोमेन? कौन सी ट्रेन से डोमेन जा सकता हूँ मैं? आई गेस तैर के जाना है, बोट के थ्रू जाना है। ट्रेन कहाँ है? कहाँ है ट्रेन से डोमेन? ऊपर पे ही जाना है, ऊपर पे ही आना पड़ेगा क्या? छोड़, मैं बोट से जा रहा हूँ, बोट से जल्दी पहुंच जाऊंगा। बोट खोल लिया हूँ, बोट से ही चलते हैं, निकाल ही लिया हूँ तो। बैट्स के वेपन मैनर में तो स्काईवर्ड हार्प ही निकला था ना, तेरे को कैसे मालूम? वैसे ही अभी तो मैंने मतलब वो चलता है वेपन मैनर का, मैं कभी कुछ नहीं बोलता, मैं कैरेक्टर मैनर की गारंटी लेता है शशि। ऐसे वैसे तू अपना अकाउंट कब देगा शशि? मेरे को लैनी पुल करना है उस अकाउंट में। अरे वो तो करूंगा, वो कर लूंगा। नल्ले लैनी को टॉन्ट तो एनिमी के मुंह पे फेंक के मारो तो भी एनिमी फर्क नहीं पड़ता जैसे वो वहां हो ही नहीं। According to down gamer it's fountain not fountain। बस देखो, डाउन गेमर कुछ भी बोले वो सही है, ठीक है, कभी वो गलत नहीं है, ठीक है। अपोज मत करना डाउन गेमर को, वो जो बोलता है सही है, ठीक है, मान लो। भाई क्या सही सीनरी है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गोल्डन एप्पल में घूम रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही एडवांस है गोल्डन एप्पल, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। क्या सही जगह है भाई। Take it easy. मैं तो उस टाइम स्ट्रीम पे बट्स का स्काइवर्ड पर हाफ देख के सो गया। अच्छा था, तूने बोला होला नहीं? हाँ मेरा को कुछ भी, चुपचाप आके गया मतलब शशि। मैं गलत जेंसन वालों ने लिखा, जेंसन वालों ने गलत लिखा है। हाँ गलत, जेंसन वालों ने गलत लिखा है, बस एग्जैक्टली। यार डिस्कॉर्ड, एक सेकंड आ रहा, मैं खुद डिस्कॉर्ड में नहीं हूँ, रुको आ गया। हाइड्रो एंड एनिमो चाहिए इनको, ओके ओके ओके, इनको हाइड्रो और एनिमो चाहिए। अंदर है क्या? एनिमी क्या है? मैंने तो एनिमी नहीं देखा है, एनिमी क्या है अंदर? इवन द डोमेन इज ब्यूटीफुल मैन। मैं अभी पहली बार अंदर जा रहा हूँ सुबह से, मेरे को देखने तो दो डोमेन के अंदर कैसा दिखता है। एंड बैकग्राउंड मस्त लग रहा है ना, बैकग्राउंड अच्छा है ये वाला फाउंटेन में।
मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर आयाका नाम मिली होती तो मैं आज कहाँ होता जेंशिन में। If the Arataki यहीं gang होते, आगे stirs up होते any जुगनू। वो trouble, तुम्हारा I'll स्किल drag इशू जरूर every हो last सकता one है of them back to डिया के साथ, apologize. लेकिन होते यहीं पे तुम। रोबोट है, बीक रोबोट, ट्रांसफॉर्मर्स हैं अंदर। चलो मिलके आते हैं। लूफी लो, जल्दी लो जो लेना है, मिलके आते हैं फिर उनसे। हमको नहीं पता है क्या है अंदर। ये वाला मैं उसके लिए कर रहा हूँ, फिशल के लिए। फाइनली फिशल बिल्ड चालू कर रहा हूँ फ्रैगर। फिशल बिल्ड करना है मुझे, बहुत टाइम से रखी हुई है फिशल। लाइक कॉन्स्टलेशन बढ़ नहीं रहा फिशल का, क्या कर सकते हैं। मैं सोचा था C6 हो जाएगी फिर करूँगा, लेकिन अब नहीं बढ़ रहा तो अब मैं कर ही लेता हूँ उसको बिल्ड। क्या पता बढ़ जाए उसके बाद। भाई OST तो मस्त है। टोटल मैंने 6 अकाउंट में यलान दिलवाई। एक में लैनी दिलवाया, एक में पुल कम खत्म हो गया था मेरे पास, तो कुछ नहीं निकला। एक को लैनी चाहिए था तो लैनी निकाला। 6 को मैंने यलान निकाली और एक को मैंने वो निकाला, क्या कुछ भी नहीं निकाला। भाई डोमेन तो मस्त है दिखने में, डोमेन तो मस्त है दिखने में। आपके पास स्किल है तो 12-3 कर लो। भाई मैं आर्कॉन क्वेस्ट की बात कर रहा हूँ जुगनू। आर्कॉन क्वेस्ट में कुछ स्किल नहीं लगती है, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुमसे। आर्कॉन क्वेस्ट नहीं हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। आर्कॉन क्वेस्ट में थोड़ी स्किल लगती है। ये कौन एनिमीज है बे? भाई कागवा खींच भी नहीं पा रहा है इनको। Worthless. Quietly now. One with nature. हाँ बे, कागवा खींच नहीं पा रहा है इनको। The birds call. What the fuck? Conquering. Here. Game's up. Fun's over. Worthless. Worthless. हाँ देखा, मैं ऊपर देखा, मस्त लग रहा है पता है देखने में। डोमेन बहुत मस्त लग रहा है डोमेन देखने में, सच्ची बता रहा हूँ मैं। फुल वैली वाली फीलिंग दे रहा है पता है गेम के अंदर। बहुत मस्त लग रहा है डोमेन देखने में। ट्रांसफॉर्मर से अंदर आपके पास स्किल है तो नहीं, कहाँ सही कहा था ना भाई। OST मस्त है पता है, डोमेन का OST मस्त है और डोमेन का लुक भी बहुत सही है। Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for इसमें you? फिशेस भी रोबोट हैं। हाँ आई नो। इन गेम धीरज को चैट किया था तो जब देख लो, देखता मैं ना ऊपर देखो लिखा था, बाकी नहीं देखा क्या लिखा है उसने। लूफी ने देख लेते हैं हम थोड़ा देर में। क्या चीज? वही लिखा था ना ऊपर देखो, फिजिकल डैमेज, पायरो डैमेज मिला है। ओके ऑन सेट मिला लेकिन सबस्टेट नहीं है। भाई सबसे बड़ी चीज यहाँ पे काजुआ खींच नहीं पा रहा इन एनिमीज को पता है, ग्रुप नहीं कर पा रहा इन रोबोट्स को खींच के बाकी एनिमीज की तरह। मस्त मस्त है बगाई गाना यहाँ का डोमेन का। सी मैं दिखाता तेरे को, देख छोटे वाले रोबोट तक नहीं खींच रहा है मेरे। देख देख देख, देख मैं यहाँ खींचता देखा उसको। Into the wind. As one with wind and cloud. हाँ सॉरी, वो अभी खींच गया, पहले नहीं खींचा, पता नहीं क्या है। Useless. Take it easy. The wind knows. ये देख, ये वाले एनिमी नहीं खींच रहे हैं। The birds call. Gotcha. रुक जा, वापस स्किल मारने दे। रुक जा कुछ मत करना। ये देख नहीं खींच रहा है, नहीं खींच रहे हैं ये एनिमीज। ये देख
वापस दिखाऊं? देख दिखाता मैं, देख वापस दिखाता, देख 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 नहीं खींच रहे हैं एनिमी। पास लेके आ, पास लेके आ उनको, पास लेके आ, पास लेके आ, पास लेके आ, पास लेके आ। अरे ये क्या मशीन गन निकाल लिया इसने? ये देख ये देख ये देख ये देख, नहीं खींच रहा है, देख ये देख। As one with wind and cloud. Quietly now. वो खुद चल के आया था। Here comes the catch. हाँ हिल भी नहीं रहे हैं ये रोबोट तो, मतलब इतने भारी हैं क्या? मतलब हिल ही नहीं रहे। फाउंटेन कुछ ज्यादा मशीन वाला नहीं हो गया है, हो गया है तो उसमें क्या है वो तो, लेकिन वो लोग लाइक इसी चीज पे वर्क कर रहे थे ना, तो इसी टाइप के एनिमीज हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हो। सुजा भाई फाउंटेन में फिशर गर्ल के पास जाओ, मेरे को बताओ वो वेपन बैनेट के लिए निकालूं कि नहीं। मेरा फिशर गर्ल मुझे खुद को नहीं पता फ्रैगर कहाँ मिलेगी फिशर गर्ल। मैं अभी नहीं जा रहा कहीं पे। फ्रैगर आज नो डिस्ट्रैक्शन, आज आर्कन क्वेस्ट करना है, ठीक है? कल बहुत डिस्ट्रैक्ट हो लिया हम लोग, थोड़ा सा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया आर्कन क्वेस्ट में हम लोग कल। Busted. Into the wind. Conquering. Clouds high. The birds come. Things are about to get dicey. Worthless. Here. Worthless. Worthless. भाई क्या है ये क्या ड्रिल मशीन है? अरे फ्रीज कर दिया बे, The चल wind रहा है। knows. Lament. As one with wind and cloud. Quietly now. Game's up. Fun's over. भाई इन्होंने पता है एक और वो बना दिया, क्या कहते हैं अब हाइड्रो वाला नहीं था, अबिस वाला हेराल्ड जो भागता रहता था पूरे मैप में, ये भी उसी टाइप का है थोड़ा सा। क्या कहते हैं इसकी मूवमेंट जिस तरह से है एग्जैक्टली सेम मूवमेंट है उसकी, लेकिन थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती थी मूवमेंट, इसकी वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल प्लेन पे मूवमेंट है बेसिकली, ऐसा कह सकते हो ब्लेड में। वेंटी तो और नहीं खींच पाएगा जब ये क्या कहते हैं काजुआ नहीं खींच पा रहा है इन एनिमीज को, वेंटी और नहीं खींच पाएगा अभी तो। ये मेरे को लगता है 2% एनिमी है जिनसे मैं मिला हूँ, अभी और एनिमीज है यहाँ पे वर्ल्ड में जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, तो अभी उनसे मिलूंगा तब मालूम चलेगा कि हो पाएगा कि नहीं काजुआ से कुछ भी। पता है मुझे धीरज, लेकिन सुबह से राइडन से डेली खेलना मजा नहीं आता ना, डिफरेंट कैरेक्टर ट्राई करने में मजा आता है। अभी एलान का सीजन है तो एलान को चला रहा हूँ मैं, अभी मेरी लेवल अप नहीं है, वो लैनेट वगैरह नहीं तो लेके आता हूँ यहाँ पे, वो ट्राई करता मैं इन पे मैकेनिक्स ट्राई करता। Here comes the catch. Gotcha. One with nature. Clouds high. The birds call. Things are about to get dicey. Boring. होमिंग मिसाइल्स मार रहा है वो अपनी गन में से, मशीन गन चला रहा है। हाँ इन फ्यूचर ऐसे कैरेक्टर आने चाहिए, रोप से सारे एनिमी बांध दो, आराम से मारो उनको। हाँ फ्रैगर तुमको सब चाहिए ना, यहाँ पे सब चाहिए है गेम में, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे जेंसन एपिक स्टोर वाले लॉन्चर से हटा के उन्हें जेंसन लॉन्चर वाला करना है, तो मैं डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं उससे नहीं हो पाएगा जुगनू, शायद हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन शायद लॉन्चर से कनेक्टेड रहता है ना जेंसन, तो रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई फाइल होगी उसमें तेरे जेंसन गेम के अंदर, तो वो देखनी पड़ेगी कैसे करना है। बाकी मेरे को ये चीज़ पता है जुगनू कि अगर तुम्हारे पास जेंसन एक ड्राइव में है और दूसरी ड्राइव में ट्रांसफर करना है
और तुम डाउनलोड नहीं करना चाहते वापस से गेम को ट्रांसफर करने के लिए ड्राइव, तो वो मैं कर सकता हूँ। इवन वन पीसी टू अनदर पीसी भी कर सकता हूँ। जैसे तेरे दोस्त के पास जेंशिन डाउनलोडेड है लॉन्चर के साथ, और मेरे पास मेरे पास नहीं है, तो मैं उससे भी कर सकता हूँ ट्रांसफर। लेकिन ये वाला ना, ये वाला मुझे नहीं पता एपिक स्टोर वाला, क्योंकि ये फिर एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाती है जैसे कनेक्टेड रहते हैं गेम। Quietly now. क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किया है, इसलिए मुझे पता है। As one with wind and cloud. Here comes the catch. Look here. Worthless. Busted. Rustin, Ricky. Strap clouds high. The birds come. Things are about to get dicey. Worthless. I have no idea how the heck Pyrosword. मेरे को लगा हाइड्रोसॉल होगा, लेकिन ठीक है। I'll take the Pyrosword. आज मैंने स्टोरेज चेक किया, फोन में 10 GB बचा है। अच्छा, तो फिर जेंशिन हटा के पीसी में करने का ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बेकार दे रहा है पीसेस। जेंशिन इम्पैक्ट डाटा मूव कर लो। आज आर्कॉन क्वेस्ट नहीं करोगे? करूंगा मैं डेविस, अभी थोड़ी देर से करूंगा। मैं डोमेन कर रहा हूँ ना, डोमेन रन्स कर रहा हूँ, तो उसके बाद करते हैं हम लोग आर्कॉन क्वेस्ट। कौशल मागराज, चीची बिल्ड बताओ। चीची बिल्ड हर किसी का डिफरेंट रहता है। चीची बिल्ड कोई मेडन बिलावेट देता है चीची को, कोई सिमिनावा टू पीस ग्लैड देता है। सबका अलग अलग बिल्ड रहता है चीची का। तो मेरे को जो पसंद है मैं बोलूँगा चीची का बिल्ड। एक और रन हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ा सा। एक राइजन रिकवरी और बची है मेरी, एक राइजन के बाद हम चलते हैं डोमेन। 3 मिनट रुक लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि हर किसी का डिफरेंट रहता है थोड़ा सा चीची का बिल्ड। तो मेरे को जो पसंद है वो सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड के साथ चीची विथ 2 पीस सिमिनावा 2 पीस ग्लैड वाली चीची पसंद है, बिकॉज उसमें हील अच्छा आता है तुम्हारी टीम के लिए, प्लस 100% स्किल का अप टाइम होता है, क्योंकि स्किल का कूल डाउन बहुत लंबा है चीची का। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो चीज़। क्रिट रेट किट डैमेज देना हो तो दो, नहीं तो वैसे तो अटैक पे तुम्हारा काम हो जाएगा विथ एनर्जी रिचार्ज। क्या आज मैंने स्टोरेज चेक किया फोन का 10 GB बिन? मैं समझा नहीं। 10 GB बिन का मैसेज अब तू बिन गलत लिख दिया तो बचा है बोल रहा है। क्या लिखा है सुबह तूने? कोई नहीं, बस देख तो रहे हो ना, वही काफी है। बिन मतलब 10 GB था ये साइड। हाँ तो 10 GB बचा हुआ है ना, वही तो मैं भी पढ़ा हूँ सुबह से। उसमें गलत क्या पढ़ा मैं? Neutralizing threats. अच्छा बिन में मतलब रिसाइकल बिन में 10 GB है तेरे? क्या बात कर रहा है? क्या डाल के रखा रिसाइकल बिन में ऐसा छुपा के लोगों से? देख लोगे क्या एक बार? कौशल अभी मैं नहीं देख सकता, बिकॉज अभी मैं 25 लाइक्स के बाद देखूंगा, अकाउंट रिव्यू करूंगा फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद मैं फिर आर्कॉन क्वेस्ट कंटिन्यू करूंगा। तब तक मैं वेट कर रहा हूँ 25 लाइक्स हो जाए स्ट्रीम पे, तो फिर मैं कर देता हूँ Navigating the world is a whole lot लोगों easier का। with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? अलग से किसी का नहीं होता गाइस, यहाँ पे सबका साथ में होता है आर्कॉन क्वेस्ट, अकाउंट रिव्यू, सॉरी आर्कॉन क्वेस्ट बोल दिया। तो सबके साथ ही करा लेना। वैसे भी 2 ही लाइक बचे हैं, 2 लाइक जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम कर देंगे अकाउंट रिव्यू 5-10 मिनट के लिए। यप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वैसा कुछ नहीं जो सोच रहे हैं। नहीं सुबह से हम नहीं मानते, जाओ हम नहीं मानते। 1 मिनट और रुक ले, 1 मिनट और बचा है, 3 रन हो जाएंगे क्योंकि Good roll. All right, maybe अरे I'll देख take रहा हूँ one पर more कुछ day नहीं देख off पा रहा हूँ। and knock out the rest of the work once I'm feeling up ऐसा to कैसे it. हो सकता है? बस हमारी स्ट्रीम क्लियर रहती है, 144 पे भी तुमको अच्छी क्वालिटी मिलती है स्ट्रीम की। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं दिख रहा कुछ भी बस तुमको? अब जाओ टेक रिवेंज। If you ever want to trade tactics, I'm always हाँ ready. अभी नहीं जा रहे हम, सुबह से थोड़ा प्रिपेयर होके जाएंगे हम। अभी हमारा कुछ नहीं खोला है, रुक जाओ कुछ तो खोल लेने दो भाई, कुछ तो खोल लेने दो, फिर हम जाते हैं वहाँ पे। ऐसा थोड़ी होता है तुम जबरदस्ती करके हमको वहाँ भेज रहे हो किसी से फाइट कराने। हमारा तो भाई टेलीपोर्टर तक नहीं खुला है, ये देखो कुछ भी नहीं खुला है मैप में मेरा।
कुछ नहीं खुला है मेरा, ये देख रहे हो तुम? कुछ नहीं खुला, ये पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं खुला है। तुमको दिख रहा है? एक टेलीपोर्टर नहीं खुला मेरा, मतलब मिनिमम 2-3 Navigating the टेलीपोर्टर world is ऐसे a खुले whole हैं। lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some हाँ for देख you? रहा, पर आंखों को कष्ट देना पड़ रहा है। अरे दे लो बस, उसमें क्या है? Why isn't it working? I don't इतना तो ले ही सकते हो कष्ट बस हमारे लिए, उसमें क्या है? लेट मी सी एनिमीज का नाम क्या है? तो सप्रेशन स्पेशलिस्ट मैक, a machine created by union between Fontaine's intricate device and Cold spatial energy beer after technology. a hard day's work. Nothing like it. अबे ये डेविस मेरे पास से हट पे, तेरा वो डायलॉग ही डायलॉग चल रहा है। A machine created by union between Fontaine's intricate device and spatial energy technology, based on whether it is imbued with Oshua or Numa energy, the machine will operate differently in battle. Oh, it seems Oshua can heal Good and roll. नहीं, हाँ All Oshua right, can. maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. I hate voice lines. I hate voice lines. सच्ची बता रहा हूँ मैं, मेरे को कुछ बोलने नहीं देते भाई ये लोग। मैं एक सेकंड रुको, इसको बंद कर देता। मैं परेशान कर देते हैं भाई, वॉइस लाइन कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं। अच्छा खासा पढ़ रहा था, पढ़ने भी नहीं दिया इन्होंने। तो इट ऐसा लग रहा है देख के कि वो पिछला वाला जो एनिमी था, दैट कैन हील ऑन नूमा एंड ओशुआ पे आई गेस अटैक कर सकता है। अबे यार अब एनिमी भी नहीं मिलेगा यार, ये गलत बात है यार। कहाँ पे है एनिमी? दिख भी नहीं रहा एनिमी, कहाँ चला गया इसके चक्कर में? हाँ ऐसा ही लग रहा है, देखो इसका हीलिंग वाला है, ग्रीन ऑर्ब है तो हीलिंग होगा। इस पे मशीन गन चला रहा है पायरो वाली। when either energy is annihilated upon attack by its opposite, an overload state will be induced and causing the machine to lose energy and necessitating the use of emergency power to sustain low and combat actions. ये बात मुझे समझ में नहीं आई, necessitating the use of emergency power to sustain low and combat actions. What do you mean? मतलब अगर मैं इसको, मतलब मैं इसको ओवरलोड नहीं करूंगा तो ये क्या कहते हैं, ये हमारा क्या कहते हैं, हैवी अटैक्स मारेगा, ज़्यादा डैमेज करने वाले। और अगर इसको वो कर दूंगा ओवरलोड, तो ये मेरे को ऐसे अटैक मारेगा जिससे डैमेज ही नहीं होगा मेरे को। ऐसा कुछ है क्या इसका मतलब? एंड नेक्स्ट है एनाइलेशन स्पेशलिस्ट मशीन क्रिएटेड बाय यूनियन बिटवीन फॉन्टेन्स इंट्रिंसिक, ये भी सेम है। इट इज ऑल्सो सेड कि नूमा और ओशुआ पे डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। इट सीम्स ओशुआ पे इलेक्ट्रिक रहता है और नूमा पे तुम्हारा हाइड्रो रहता है। अगर इन्होंने गलती से बताया, अगर इन्होंने एस्पायरल अबिस में इनको डाल दिया और ये नहीं बताया कि नूमा और ओशिया एनर्जी वाले आने वाले हैं, तो और रैंडमली लाइक नूमा ओशिया जब भी तुम एस्पायरल अबिस के अंदर जाओगे रैंडमली अपीयर होंगे तुम्हारे, नूमा कभी ओशिया वाले अपीयर होंगे, तो ज़्यादा अनोइंग होंगे, ये पता है। काउंटर करना डिफिकल्ट हो जाएगा इनको। इसमें भी सेम चीज़ कह रहा है। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट मैक। ओके, इट सीम्स ओशुआ वाले पे ये क्रायो मारता है, नूमा वाले पे पायरो मारता है। सेम डिस्क्रिप्शन है। अटैक्स आर डिफरेंट हियर। जियोलॉजिकल सर्वे मैक। ओशुआ पे जियो अटैक्स हैं, नोवा पे आई थिंक एनिमो अटैक्स हैं। सो हर एनिमी के पास दो एलिमेंट्स है बेसिकली। ओके, फिर फ्रैगर के जैसा चश्मे बहादुर बन जाऊंगा। देख रहा है क्या कहते हैं, देख रहा है फ्रैगर तेरी बेइज्जती कर रहा है वत्स तेरे पीछे, पीठ पीछे। मैं कहाँ हटूं? नीलू ले जा, वन शॉट नहीं होना है तो ले जाना, नहीं होना तो है किसके खिलाफ? सुबह से ये नूमा ओशुआ का कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आ रहा मुझे। वत्स एक काम कर, गेम खेलना छोड़ दे, बेस्ट ऑप्शन। समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, ये ब्रीचर प्राइमस नाम से एक एनिमी है, एनिमी हैंडबुक में। हाँ, वो बहुत अजीब एनिमी है, बताए एलिमेंट चेंज करता है अपना। कौन? हाँ, ब्रीचर प्राइमस नाम से, नीचे गोल गोल सा है, उससे लड़के देखो। वेट, उसकी बात तो नहीं कर रहा, क्रैप की बात तो नहीं कर रहा तो?
नहीं गोल गोल है पर्पल कलर का नीचे। कौन है? एक सेकंड मैं भी तो देखूं Breacher कौन है Primus। ये फॉन्टेमर अवेरेंट्स ब्रीचर प्राइमस। नहीं है मेरे पास, एंट्री नहीं है उसकी ऐसी कोई। एंट्री नहीं होगी है, सॉरी। हाँ मेरी एंट्री नहीं है मेरे ऐसे, को entry है। कोई भी मेरे एंट्री को- नहीं है उस टाइप की। अरे यार टारगेट पोजीशन हैज नॉट बीन अनलॉक्ड है, कोई नहीं। रुकना, मेरे को अनएक्सपेक्टेडली आने दे एनिमी को, तब मजा आएगा, मैं मारेगा उनको। 25 लाइक्स आर डन, लेट मी कंप्लीट दिस डोमेन रन, उसके बाद मैं कर देता हूँ। वहीं पापा आइडलॉन, ये नुमा ओशिया का कौन? अरे जब तक धीरज खेलेगा तब तक मैं खेलेगा। धीरज लॉर्ड को फॉलो करता है हम, ये बात धीरज को बताओ। धीरज तुम्हारा फॉलोअर मिल गया। वत्स बोल रहा है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। जब तक धीरज है तब तक वत्स है बोल रहा है। चलो तो टाइगर है। ये ले जाना है, इलेक्ट्रिक ले जाना है तेरे को। ट्राई करनी धीरज के लिए सिंप किया जा रहा है, बताओ लोगों के द्वारा कैसे दिन आ गए। पता है मैं ये सोच रहा हूँ, अगर इन्होंने नहीं दिया ना नुमा ओशिया वाले एनिमी डाले और इन्होंने ये नहीं बताया कि नुमा ओशिया आएगा और रैंडमली अपीयर हो रहा है जब भी तुम स्पाइरल में रिट्राई कर रहे हो एनिमी, बहुत अनोइंग होगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं। स्पाइरल बहुत ज़्यादा अनोइंग होगा, भले चाहे जितना ईजी हो। अजीब सा लग रहा है, अभी बंद कर दिया था डायलॉग जहाँ पे, सब साइलेंट लग रहा है पूरा गेम प्ले, सिर्फ म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड का। धीरज नहीं, धीरज लॉर्ड है वो, लॉर्ड को मान देते हैं डेविस। ओ भाई एक सेकंड, ये क्या मिला है? क्रिट रेट विद क्रिट डैमेज एलिमेंटल मास्टरी पीस, ये क्या पीस मिला है? वो भैंस की यहाँ ट्रिपल ड्रॉप हुआ था वो भी। देखो धीरज तुम्हारे लिए कितनी सिंप की जा रही है पत्स के द्वारा चैट में। एक तो आपकी आवाज नहीं आती, नहीं तो वॉल्यूम करता हूँ, देन बीच में ऐड आके कान फाड़ देता है। क्यों आवाज कम लग रही है स्ट्रीम पे क्या? सुबह से वैसे तो फुल है मेरी आवाज, कम लग रही तो बताओ मैं बढ़ा देता हूँ। गेम साउंड में कम कर दूंगा थोड़ा सा। भाई ये लोग इस डोमेन के अंदर सेटिंग का ऑप्शन क्यों नहीं डालते, मुझे ये जानना है। एटलीस्ट होंकाई स्टार रेल में भी है ये तो ऑप्शन, सिमुलेटेड फॉर टाइम, इवन उसमें भी कर सकते हो तुम, फॉरगॉटन हॉल में भी। चार 4000 का दिख रहा है मुझे, 12000 वो इलेक्ट्रो जंप था उसका तुम्हारे विडो का। एनर्जी प्रॉब्लम हो रही है तेरे को? वाह भाई, वो ब्राउजर में नहीं मोबाइल में देख रहा होगा ना, जैसे मोबाइल में थोड़ी ऐड ब्लॉक कर सकते हैं, ब्राउजर में जरूर कर सकते हैं ऐड ब्लॉक। ओ भाई एक और मिला, क्रिट रेट विद क्रिट डैमेज डबल एचपी, बट यहाँ पे क्रिट डैमेज रोल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। एक और पीस मिला सेम टू सेम, बट डिफरेंट उसमें मिला है, ये ऑफिशियल वाले पीस में मिला है ये वाला मुझे। क्या बात है, ये टीम लकी है, क्रिट रेट क्रिट डैमेज दे रहा है मुझे, पता है लकी टीम है ये मेरे लिए। इस डोमेन में बफ पता है एचपी रिड्यूस और गेन पे है।
देख लेता हूँ मैं, बता दिया उसने, मैं देख ले रहा हूँ उसके बाद। डोमेन रन खत्म हो गया मेरा यहाँ पे। हीलिंग बोनस विथ एलिमेंटल मास्टरी, क्रिट डैमेज एंड एनर्जी रिचार्ज। कुड बी गुड, पता नहीं किस किस पे लगाएंगे ये, लेकिन कुड बी गुड है मेरे हिसाब से। ये क्या क्या लगता है धीरज को, कोकोमी को वो बनाया जा सकता है क्या क्रिट वाली आफ्टर आफ्टर ये वाले जो नॉर्मल अटैक, चार्ज अटैक, डैमेज वाले जो आए हैं तुम्हारे आर्टिफैक्ट आए हैं मैराचू से हंटर वाले, क्योंकि इसमें क्रिट रेट पता है कितना मिल रहा है? 3 स्टैक मिल रहा है एचपी इंक्रीज डिक्रीज पे। 36% क्रिट डैमेज मिल रहा है, क्रिट रेट मिल रहा है तुमको। क्रिट रेट बाकी उससे आ सकता है आर्टिफैक्ट से। क्या लगता है क्रिट वाली कोकोमी बना सकते हैं अभी? भाई मैं इस डोमेन में था ना, बोला तो डोमेन करने के बाद मैं बोल देता हूँ लोगों का। डोमेन हो गया, अब मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ अपनी यूजुअल पोजीशन है अपनी। मेरे को टावर पसंद है, टावर के पास जाके बैठेगा। वहां पे थोड़ा चिल साउंड रहता है। गाइस आईडी दे दो अपनी अपनी एंड कैरेक्टर बता दो कौन सा देखना है आपके अकाउंट पे हमें। मैं मैक्स 1 या 2 कैरेक्टर पर अकाउंट देखूंगा, तो जो आपको दिखाना है वो दिखा सकते हैं यूआईडी देके। मैं 5-10 मिनट रिव्यू करूंगा, उसके बाद मैं आर्कन क्वेस्ट पे जा रहा हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं ऑलरेडी। गया ना। हाँ इसी टावर की वहीं मेरी एलान लेवल 90 की हो गई सुजा भाई। नाइस वत्स। वैसे वत्स तू तो बोल रहा था तू खेल नहीं पाएगा, कमीशंस नहीं कर पाएगा, और फ्रैगर जब तेरे अकाउंट में कॉम्स करने गया तो तू पहले से करके बैठा है, सिर्फ कलेक्ट नहीं किया, मतलब आधा अधूरा काम किया है। ऐसा क्यों भाई? हैं? ऐसा क्यों भाई? $38,000 HP, 187 to 58 to 153। That's nice एक्चुअली। तुमने यहाँ पे HP पे वर्क किया है एंड HP तुमने इंक्रीज करने में सक्सेसफुल रहे हो। ऑल्सो तुम एनर्जी रिचार्ज भी मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे हो, प्लस यहाँ पे क्रिट रेट, क्रिट डैमेज भी मेंटेन्ड है तुम्हारा। वो भी फेवोनियस वॉर्बो पे है। ओके नॉट बैड। आर्टिफैक्ट में आ रहा होगा आई गेस क्रिट्स काफ़ी सारे हैं। 4 पीस एम्बलम पे है ये भी बिल्ड, काफ़ी अच्छा बिल्ड है तुम्हारा, क्योंकि एचपी काफ़ी अच्छी है, एनर्जी रिचार्ज तुम्हारा फेवोनियस वॉर्बो पूरा देर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और क्रिट रेट, क्रिट डैमेज भी है तुम्हारा। बट मैं यही चीज़ बोलूँगा, थोड़ा सा क्रिट रेट बढ़ाना पड़ेगा तुमको फिश इस पे यलान पे, क्योंकि 60-65 पे पता है तुम्हारा थोड़ा रेगुलर क्रिट करेगी यलान। 60-58 पे या 55 पे थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। मे बी 4 एरो जा रहे हैं तो 2 एरो क्रिट करेंगे, 2 एरो नहीं क्रिट करेंगे, तो ऐसा रहेगा। बेटर रहेगा अगर तुम 65 को लगो, लेकिन मेरे को नहीं लगता चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी अच्छी एचपी है तुम्हारे उस पे एलान पे। 29 6.6 काफ़ी अच्छा आर्टिफैक्ट है। हाइड्रो डैमेज विद 19.4 6.2 बहुत सही है। एनर्जी रिचार्ज भी है क्योंकि इसमें ये भी काफ़ी अच्छा पीस है तुम्हारा, क्योंकि इसमें एचपी परसेंटेज है यहाँ पे 23.3 to 2.7। हाँ काइंडा ओके पीस है, बट यहाँ पे एलिमेंटल मास्टरी भी है एंड एचपी परसेंट। एक सेकंड, तुमने एचपी परसेंटेज सर्कुलेट लगा रखा है तभी तुम्हारी एचपी मेंटेन्ड है, तब भी तुम्हारा लाइक क्रिट रेट कम पड़ रहा है। यूजुअली हम लोग यहाँ क्रिट रेट का सर्कुलेट लगाते हैं, यहाँ पे तूने एचपी लगा रखा है क्योंकि तू वेपन तेरा ऑब्वियसली एनर्जी रिचार्ज का है, तो तू तेरे यहाँ पे एचपी है और यहाँ पे एचपी है, तब भी तेरा 38,000 हो रहा है। मेरे को लगा यहाँ क्रिट रेट का होगा, तब भी तू लाइक 38,000 एचपी कंट्रीब्यूट कर पा रहा है इस पे। नॉट बैड आई गेस, नॉट बैड। Would have been better though. It's better to have crit rate circulate and HP percentage on attributes than HP percentage as main stat in circulate, you know, for इसके लिए एलान के लिए मेरे को ऐसा लगता है। जुगनू का लैनी देखना है, एक सेकंड पहले उसका देखेंगे किसकी आई है आईडी सयाक के बाद। खुशहाल की आई है। खुशहाल बिना स्पेसेस के दो हमको यूआईडी अपनी, एंड कैरेक्टर के नाम भी लिख देना एक बार वापस से। तुम्हारी यूआईडी हमें दिख नहीं रही है क्योंकि चैट में बीच में स्पेसेस मत दो यूआईडी में।
मोस्ट कस्ड अकाउंट। अब देखने दो हमको किसके आर्टिफैक्ट छीने हैं तुमने जुगनू। 1800 अटैक विथ 59 to 146 120 एनर्जी रिचार्ज। यही तो प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम होगी इसको, पता है। भले ही मोनो पायरो टीम में रहता है ये, लेकिन एनर्जी पता कॉस्ट 60 होने की वजह से उसकी एनर्जी नहीं आ पाती है मोनो पायरो में। इसकी लैनी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है एनर्जी आने में, तो एनर्जी रिचार्ज तेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा लैनी पे। बाकी 59 to 146 इज ओके काइंड ऑफ बिल्ड। किसके आर्टिफैक्ट दिया है तूने, मेरे को ये देखना है। प्लस मेरे को ये जानना है तू प्रोटोटाइप क्रेसेंट क्यों इस्तेमाल कर रहा है। हामा यूमी इस्तेमाल कर ले इससे अच्छा, प्रोटोटाइप क्रेसेंट से अच्छा तो फायदा होगा तेरे को। एंड तूने वो 4 पीस भी नहीं लगाया, तूने 2 पीस ग्लैडिएटर 2 पीस एम्बलम सेवर्ड फेट लगा रखा है। मेरे को लगता है तेरे को पता है वो फार्म करना ही पड़ेगा। लैनी के जो पीसेस है ना अभी जो मैं जिसका क्रिट रेट, जिस पे क्रिट रेट था मेरे मिला है, वो वाले पीसेस फार्म करने पड़ेंगे मैच से जो भी था, तब तेरा लैनी अच्छा डैमेज करेगा। पता है जुगनू, तूने उठा के किसी किसी के आर्टिफैक्ट छीन के लगा दिए, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि तेरे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैरेक्टर के आर्टिफैक्ट छिने हुए हैं यहाँ पे काफी सारों के। नॉट अ बैड बिल्ड आई वुड से, बट कुड बी बेटर। लैनी का लैनी के केस में तुमको चाहिए ही होगा वो आर्टिफैक्ट सेट, काफी अच्छा आर्टिफैक्ट सेट है लैनी के लिए। चीची होता हो क्या यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ सही है क्या? धीरज और वत्स के बीच में ये क्या चल रहा है चैट में? ये क्या चल रहा है इस चैट में धीरज और वत्स के बीच में? ना वत्स तुम्हारी एलान हम देख चुके हैं, हम नहीं देखेंगे तुम्हारी एलान। यूआईडी डजंट एग्जिस्ट बोल रहा है। व्हाट? 8363 99931 थोड़ी देर के लिए डजंट एग्जिस्ट बोल रहा था। तुमने बोला था चीची और हुताओ देखना है तुमको, ठीक है चीची देखते हो बोला है। 3000 अटैक है, काफी अच्छा अटैक है तुम्हारी चीची पे विथ नो क्रिट रेट क्रिट डैमेज। ओके 37% हीलिंग बोनस भी है विद 104 एनर्जी रिचार्ज। एनर्जी रिचार्ज बढ़ाना पड़ेगा तुमको चीची का एनर्जी रिचार्ज का, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज बढ़ाना पड़ेगा। तुमने कागज श्रूबी निशीन दे रखा है। देखो तुम्हारी चीची ऑन फील्ड अटैक नहीं करने वाली है, तो I would not suggest Kagesh Ruby Nishin to Chichi actually. I would rather suggest putting क्या कहते हैं sacrificial sword or maybe some energy recharge sword here because 41% है, तुम अटैक जाने तो लूज होने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज क्या है, तुम्हारा एनर्जी का प्रॉब्लम आएगा पहली बात तो इस चीची पे। भले ही अटैक अच्छा हील अच्छा करेगी, लेकिन एनर्जी का प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा चीची पे, क्योंकि ऑन फील्ड नहीं है चीची यहाँ पे। और कागज रूबी निशीन तभी वर्क करेगा जब चीची से अटैक कर रहे हो किसी पे। और फील्ड शायद नहीं वर्क करता है कागज रूबी निशीन, आई थिंक सो। हाँ तुम्हारा नॉर्मल चार्ज एंड प्लंजिंग अटैक पे ही वर्क करता है कागज रूबी निशीन का पैसिव, तो चार्ज अटैक उस पे वर्क ही नहीं करेगा चीची पे। rather I would suggest putting क्या कहते हैं लायंस रॉर ऑन चीची देन कागज रूबी निशीन, अगर देना ही है तुमको अटैक स्लॉट्स तो। 23 अटैक 46 अटैक 46 अटैक 46 अटैक एंड 27 अटैक। हर जगह से अटैक आ रहा है बंदे का, हर जगह से अटैक आ रहा है। एक सेकेंड, ये कैसा पीस है बे? क्या ये मैं सही देख रहा हूँ? एचपी रोल्ड है क्या इस पे? पीस पे 807 एचपी है। ऐसा लग रहा है ये पीस अभी रोल्ड भी नहीं किया बंदे ने, ऐसा लग रहा है अभी रोल करना बाकी है। इस पीस को देख के ऐसा नहीं लग रहा, फील नहीं आ रही है ऐसे कि मतलब रोल ही नहीं किया इसको, इस पीस को अभी तक बंदे ने। मेरा अकाउंट में आईडी पास नहीं लगाने दे रहा ना, एफबी आईडी से है वो। हाँ तो कोई नहीं, हम ससी हम कर लेंगे मैनेज, तुम दे दो बस एफबी वाली आईडी भी।
कागिश रूबी निशिन इन्होंने काजुआ के लिए बनाई थी, बट काजुआ यूज़ नहीं करता कागिश रूबी निशिन। काजुआ पे अच्छा है, बट डीपीएस काजुआ पे अच्छा है। उसके बाकी बाकी कोई कैरेक्टर लाइक मेरे को नहीं लगता यूज़ कर सकता है, अनलेस वो ऑन फील्ड नहीं है। आयाका पे कर सकता है कागिश रूबी निशिन, क्योंकि आयाका एक्चुअली चार्ज अटैक मारती है, तो आयाका के लिए काफ़ी अच्छा है कागिश रूबी निशिन। बट फिर वही है, क्रिट रेट किट डैमेज नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो मेंटेन करने की प्रॉब्लम आएगी। तो यही प्रॉब्लम है बस कागिश रूबी निशिन के साथ, लेकिन आयाका पे काफ़ी अच्छा है कागिश रूबी निशिन। C2 चीची है बंदे की, दुख दर्द पीड़ा है यहाँ पे। डबल क्राउंड भी कर दिया बंदे ने चीची को, वाह भाई। नॉर्मल अटैक क्राउन किया बंदे ने चीची का, मतलब मानना पड़ेगा चीची लवर है बंदा। बंदा चीची लवर है गाइस, देख रहे हो, डबल क्राउन किया बंदे ने, डबल क्राउंड है इसकी उताव भी। 1100 अटैक है, 33,000 HP है, 73 to 230 वो दिया है क्या, स्टाफ ऑफ होमा है। कम है मेरे हिसाब से, HP थोड़ी कम है होमा के साथ भी, बट रेशियो काफ़ी अच्छा है, 73 to 230 इज रियली गुड रेशियो ऑन हुताओ। HP थोड़ी लो है मेरे को ऐसा लगता है 33,000 हुताओ पे, 35-36 इज रियली गुड HP। अटैक डजंट मैटर बिकॉज हुताओ जब स्किल इस्तेमाल करेगी तो अपने आप अटैक बढ़ जाएगा उसका, 3000 से ऊपर जाएगा अटैक, तो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन HP थोड़ी कम है 33। बाकी पीसेस काफ़ी अच्छे होंगे, देखो ये वाला पीस काफ़ी अच्छा है, 22 7.0 10.5 HP में भी, और 299 HP फ्लैट HP में भी, ये वाला काफ़ी अच्छा फेदर है। दिस इज ऑल्सो रियली गुड फ्लावर एक्चुअली, इसमें भी HP परसेंटेज है यहाँ पे, इसमें तुम्हारा क्रिट रेट है बट नो क्रिट डैमेज यहाँ पे, विथ HP परसेंटेज 16.9, 10.5 अटैक भी है, 37 एलिमेंटल मास्टरी भी आ रही है, पायरो डैमेज गॉबलेट, ओके ये दिस इज ओके पायरो डैमेज गॉबलेट आई गेस, एंड ये एलिमेंटल मास्टरी का सैंड्स लगा रखा है इसने, ओके अच्छी है, मतलब सैंड्स तो मेरे को लगा अगर HP का लगा देगा यहाँ पे तो ये चले जाएगा आई गेस, 37 टच हो जाएगा। तो एलिमेंटल मास्टरी का सैंड्स अभी देखा मैंने, एक्चुअली अभी नोटिस किया मैंने, ठीक है मेरे हिसाब से 33 विद एलिमेंटल मास्टरी हुताओ इज रियली गुड, अच्छे हैं पीसेस हुताओ पे, बहुत अच्छे पीसेस हैं हुताओ पे। बट तुम्हारा स्पाइरल अविस 36 स्टार कैसे नहीं हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी कैरेक्टर दिखा रहे तुम्हारे अकाउंट में हमको, या तुमने ट्राई ही नहीं किया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरी आयका पे अब 33 to 237 हो गया अभी थामिनोमा। सुबह से एक बार तुम अपने हुताओ को वो देखो ना, क्या कहते हैं, कागिश रूबी निशिन देखो, उसके साथ डैमेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है तुम्हारी उस पे आयका पे, वैसे भी अटैक सेम ही है आयका इस दोनों वेपन का। और भी आराम से मार लेगी ससी, एलिमेंटल मास्टरी वाली है, अच्छी HP भी है। सुजा भाई यलान क्या होती है धीरज, हमको नहीं पता यलान क्या होती है, हमको नहीं पता यलान क्या होती है। अरे हुताओ को नहीं, आयका को ईशीन देना है सुबह, क्या सुनता है रे, मैंने आयका को बोला आयका को ईशीन दे, गलत सुनता है साढ़े सुबह तो। मेरी भी क्रिम्सन हुताओ इनकमिंग हो रहा है, पता नहीं कब तक खत्म होगा बिल्ड। मेरी हुताओ नहीं देखी, कितनी बार बोला, अब सुबह कल देखेंगे तुम्हारी हुताओ हम। तुम्हारी हुताओ बाद में देखेंगे। बस वैसे तुम फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो, मैं नहीं देख सकता तुम्हारी आईडी, फ्रेंड लिस्ट में ही नहीं हो तुम बस हमारी आईडी में, फ्रेंड लिस्ट से बाहर हो भाई तुम हमारी आईडी से, बस कैसे देख ले हम तुम्हारा यलान, ये बताओ पहले, यूआईडी तो तुमने दिया नहीं हमको बस। मोदी इंडिया के लॉर्ड हैं, उसको भी नहीं पता होगा सब लैंग्वेजेस।
ना हम कल देखेंगे सुबह से, आज नहीं देखेंगे तुम्हारा। कल देखेंगे हम तुम्हारा। थैंक्स बट्स फॉर यू आईडी। एक सेकेंड, ये 32,000 HP है विद 64 to 156 208 एनर्जी रिचार्ज। काफ़ी अच्छा बिल्ड है। क्रिट रेट भी अच्छा है, एनर्जी रिचार्ज भी काफ़ी अच्छा है। आई वॉज सेइंग दिस एक्चुअली, ये काफ़ी अच्छा बिल्ड है। आई गेस ऐसा बिल्ड कर लोगे ना तुम, क्या कहते हैं, सयाक, तो काफ़ी अच्छा होगा। ये बिल्ड काफ़ी अच्छा है। इसने भी फोनेस बॉर्बो ही दे रखी है एक्चुअली में। छी भाई, ये कितना गंदा HP सेंस है। डिफेंस रोल्ड है, एनर्जी में एक रोल है, क्रिट रेट क्रिट डैमेज में कोई रोल ही नहीं है। कितना गंदा पीस है वो। आई गेस सारे ओके पीसेस लगे हैं अभी तेरे बैटर। अभी सब में इंप्रूवमेंट हो सकता है एक्सेप्ट फैदर। फैदर इज ओके मेरे हिसाब से, बट बाकी सब में इंप्रूवमेंट हो सकता है तेरा। ये भी ठीक है आई गेस, 15% HP आ रही क्योंकि इससे। बाकी सब में इंप्रूवमेंट है, हो सकता है तेरे में। किसी में भी ढंग के रोल नहीं है, तो अच्छी हो सकती है और एलान तेरी। आर यू श्योर? यस सोसिस, मिला ही नहीं है HP सेंट। चलो गाइस, अभी आर्कॉन क्वेस्ट चलते हैं। अकाउंट रिव्यू इज डन फॉर टुडे एंड अब मैं आर्कॉन क्वेस्ट जा रहा हूँ। अब मैं किसी का अकाउंट नहीं रिव्यू करूंगा। अब हम अकाउंट रिव्यू करेंगे कल वापस से, ठीक है। अभी अब आर्कॉन क्वेस्ट कंटिन्यू करते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट, 11:30 हो गए हैं। ठीक है। एंड गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर देना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे नए हैं। एंड लेट्स सी आर्कॉन क्वेस्ट कहाँ पे है हमारा। तो आई एम हियर, ये क्या होता है? तो आई एम हियर ड्रैको, वैसे ये क्या होता है तो आई एम हियर? वाह भाई, जाने नहीं दे रहा भाई गेम मुझे उस साइड। ये कर लो तुम पहले। ये मेरे को कोई ये बताओ, ये इनको डर नहीं लगता क्या? मतलब ये पिलर्स के अंदर पानी भर रखे हैं, रास्ता तो है ही नहीं है कि किसी जगह की। फिर पिलर के अंदर पानी क्यों है? ये डर नहीं लगता क्या इनको? आप मेरे से आगे ना हो क्या काश आर्कॉन क्वेस्ट, वरना मेरे को जाना पड़ेगा। अरे धीरज, चिंता मत करो, हम सबसे पीछे हैं। हम लिटरली सबसे पीछे हैं आर्कॉन क्वेस्ट में। अभी तो मेरे को जगह भी नहीं मिल रही नीचे जाने के लिए। ये क्या जगह है? पूरा सिटी एक्वा बस से कनेक्टेड है, तो मतलब ऊपर भी एक्वा बस चलती है क्या इनके? सुबह से मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कल करेगा मतलब कल कर देगा। मैं चिंता मत करो। तुम्हारे लिए एंका खोलना पड़ता है ना सुबह से, इसलिए हम नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे लिए एंका खोलना नहीं पड़ता तो मैं देख लेता। अबे यार, ये जगह ही नहीं मिल रही, कहाँ से रास्ता है? साला क्या भूल भुलैया बनाया ये भी इन्होंने। मेरे को लगता था सुमेरु भूल भुलैया है स्टार्टिंग में, अब मेरे को लगता है फाउंटेन सबसे ज्यादा बड़ी भूल भुलैया है। सच्ची बता रहा हूँ मैं, मिलता ही नहीं है रास्ता मुझे। हेलो पोकेबॉल, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हाल चाल हो, कैसे हैं, कैसे हो? यूज द लिफ्ट ब्रो। वेयर द लिफ्ट? वेट, ऊपर ही जाना था क्या मुझे? तो मैं नीचे आ गया क्या मैं गलती से? वाह भाई। या एको वाज टू ट्रैवल एवरीवेयर इन फाउंटेन। सुजा भाई, वैसे तू धीरज पता अपने अकाउंट में जाके स्किप कर सकता है, यहाँ पे देख ले आर्कॉन क्वेस्ट। सुजा भाई को बोल रहा हूँ 89 डेज लगेंगे आर्कॉन क्वेस्ट करने में। अभी थोड़े दिन में बस का भी किराया मांगेंगे 10 प्रीमो पूरा फाउंटेन। अरे ऐसे वाले हैं न्यूबी अकाउंट, आपका फ्रेंड लिस्ट पे हो। अरे फिर भी कल ही कर देंगे सुबह से। सबसे पहले तुम्हारा करेंगे, ठीक है? कल आना स्ट्रीम पे, सबसे पहले तुम्हारा करेंगे रिव्यू, ठीक है? भगवान करे आर्कॉन के बैनर पे सूजा 50-50 लूज करे, चीची निकले, और इस नाइंसाफी के लिए है। सची में मेरे को डर नहीं लगता है, मेरे पास प्रीमोस है क्योंकि इन्होंने मैनी चेस्ट दे दिए हैं इनसाइड सिटी। एक हाइड्रोक्लास हाईएस्ट पॉइंट पे भी है टावर इन द सिटी। पूरा 5 किलोमीटर क्लाइम करो।
ऐसा क्या, मैं सही फ्लोर पे था क्या? वाह भाई, बताया क्यों नहीं कि मैं सही फ्लोर पे हूँ? मतलब भाई क्या भूलभुलैया बनाई है इन्होंने। फ्रॉम द स्टेयर सेलेक्ट द एयरबस अराइवल फ्रॉम द फ्लावर पॉट। भाई मुझे यही नहीं पता एक्वा बस मिलती कहाँ पे है। तू स्टेयर से एयरबस सेलेक्ट करने की बात कर रहा है, एयरबस क्या होती है अब मुझे ये भी नहीं पता है केवल है। मैं बोलता रहा मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं लिटरली ढूंढ रहा है अभी कि जाना किधर है। यहाँ पे कौन से फ्लोर पे जाना है हमको? नाविया लाइन पे जाना है। सुजा वेल देखो तो ड्रैको भी चेक इट। ड्रैको भाई एक बार मेरा बेल्ट देख लेना। मैं जा रहा कहाँ जा रहे हो सुबह से? रुको ना, यहाँ बैठो ना बाजू में। कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मतलब कभी तुमने सोचा है कि तुम चले जाओगे सुबह से तो बस का क्या होगा? अरे लिफ्ट से जाओ, उधर से एक्वा बस मिलेगी। हाँ दिख रहा है डेविस, आपका चैट हमें दिख रहा है। सॉरी तेरा चैट मुझे दिख रहा है, आपका क्यों बोला मैंने तेरे को? ये सही है बे, लिटरली उससे बात करो ये और बोलता है इमीडिएटली चलो चलते हैं। मतलब इस बंदे को प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब जब बुलाऊं, जब जाने को बोलूं तब जाने लगता है ये बंदा। बोल रही है एल्फेनी करके। वो वहां पे सामने क्यूब्स क्या है बे? द डेस्टिनेशन ऑफ करंट टूर इज एरेनी इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्थ विजिटिंग इंक्लूडिंग फाउंटेन ऑफ ल्यूसन एंड ओपेरा इक्लिप्स एपिकलीज। ओके, if you look to the left in the direction we are currently traveling you will see the famous fountain research institute up in the sky, an experiment gone wrong turning into the sightseeing opportunity of human ingenuity doing truly wondrous thing. To the right बोल रहा है, which means that tower over there or what? ये point of interest बताता है बे एल्फेनी। मेरे को वो दिख रहा है। भाई थोड़ा ज्यादा ही दूर नहीं है रास्ता? ऐसा नहीं लगता कुछ ज्यादा दूर है जगह? We are now approaching the final destination. Please sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I take any forgotten item to lost and found paperwork is rather annoying, as mucine hands are not suitable for grabbing pans. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. ये हमेशा टूर गाइड बनती है क्या हमारे लिए? थैंक यू। चलो बाय। वेलकम टू फाउंटेन। We are finally in Fontaine, guys. I can't believe it. I thought all this time I am in Sumeru. We are finally in Fontaine. Thanks game for बताने के लिए। But it's okay. He is mentally ill. Who? Subhasis, हम नहीं है mentally ill. हमने देखा तुम रिच करते रहते हो वत्स के लिए। अरे हाँ, एक सेकंड डायलॉग्स थे यहाँ पे, मैंने म्यूट कर दिया था, मैं तो भूल ही गया। आवाज होगी ना इसमें। अच्छा याद दिला दिया तूने मेरे को धीरज, पता अच्छा याद दिला दिया। ये क्या है? रेनबो रोजेस, ये क्या नई चीज है? रेनबो रोजेस करके ये कैसी चिड़िया हैं यार? ये क्या है? बूले फ्रूट, ये क्या नई चीज मिली है? मारा कोटे। Take it easy. I have no idea. ये क्या जगह है? ये कोई नया फ्रूट बना दिया इन्होंने। हाँ, लैनी का वो टिगनारी पे अच्छा है पोकेबल।
रिंग्स रोजेस, रिंगा रोजेस। डिसाइड कर लो ससी और तुम मिलके, रिंगा रोजेस है या रिंग्स रोजेस है। Take it easy. ये क्या जगह है बे? और ये क्या है बे? ये क्या है भाई? दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल ड्यूड, लुक एट दैट, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है मैं RTX ऑन कर दिया गेम में, ऐसा फील आ रहा है मुझे। ये कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है ये जगह देखने में। देखो ये देखो, कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है ये जगह देखने में। लुक एट दिस प्लेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। देख पानी के अंदर तक का दिख रहा है मुझे यहाँ से, ऐसा लग रहा है RTX ऑन कर दिया हूँ, कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है चीजें मेरे को, और एक भी लैग नहीं हो रहा है। Good roll. इसका नाम है बुल्ले, All रखते right, हैं maybe खुले। I'll take one more day off and knock out the rest of the work. हाँ on ऐसे ही something घूमते घूमते हो that's जाएगा, वैसे मेरे को लगता है वो घूमते हुए ही वाला है। वैसे भी वो लिमिटेड थोड़ी है इवेंट, वो पूरा रहेगा इवेंट तुम्हारा 4.1 तक मेरे हिसाब से। 4.1 जब तक नहीं आता तब तक रहेगा वो, तो दिक्कत की बात नहीं है हमारे लिए। ब्राइटनेस कम करने के पक्ष, नीचे बॉस खड़ा हुआ है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस हम सबको पे लेगा। रुको रिड्यूस करते हैं इसकी, क्या कहते हैं, ब्राइटनेस और रिड्यूस करते हैं, डार्क करते हैं, लेट्स सी कैसा दिखता है गेम। वो भैंस की यहाँ कैसा लग रहा है, और अच्छा हो गया गेम। देखो बादल देखो ऊपर कितने मस्त लग रहा है, सेलेस्टिया भी क्लीन दिख रहा है। कलर थोड़े एनहेंस हो गए हैं, कलर डार्क हो गए हैं गेम के, ज्यादा डार्क कर दिया तो, लेकिन वो ज्यादा बेटर था मेरे को ऐसा लगता है। प्रीवियस वाला ब्राइटनेस बेटर थी। ये वाली बेटर थी आई गेस मेरे हिसाब से, इसमें अच्छा लग रहा था। हाँ इसमें अच्छा लग रहा है। हैं क्या बात कर रहा है, सिर्फ 11 डेज के लिए है। अच्छा हुआ तूने मेरे को बता दिया, मेरे को लगा 4.1 तक होगा। आपने मेरा बदला भी नहीं लिया है। अरे वो ले लेंगे तो बस चिंता मत करो, आज नहीं तो कल ले ही लेंगे बदला। अभी हैं हम कहीं जा थोड़ी ना है, ले लेंगे बदला तुम्हारा। आपने सुबह से आप इनका पे जाओ एंड आर्ट गैलरी पे डालो। ये क्या है, ये क्या लॉन्चर है, ये क्या लॉन्चर है, ये क्या गेम मुझे मतलब ये बोलना चाह रहा है मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ, मतलब मैं उतना दूर से चल के इधर तक आया, वो उधर से इधर तक मेरे को ले आया। मतलब ये गेम मुझे मेरी काट रहा है भाई, ये क्या क्या चल रहा है गेम के अंदर। मतलब मैं इतना मेहनत से चल के आया, मतलब उधर से इधर तक, वो टेलीपोर्टर उधर से इधर मेरे को पहले ही भेज दिया, वो भी हाइड्रोकुलस के साथ। मतलब ये तो बहुत गलत बात है। Take it easy. ये जबरदस्ती हाइड्रोकुलस लॉन्चर है। हाँ जबरदस्ती वाला हाइड्रोकुलस लॉन्चर है। मे भी बिगनर्स के लिए बनाया होगा इन्होंने, जिनके पास जोंगली ओंगली नहीं है या काजुआ नहीं है, तो उनके लिए है वो लॉन्चर, पता है, वैसे लिया जा सकता है नॉर्मली भी। गेम यही वो, हमने चैट ही नहीं पढ़ी तुम्हारी। अबे ये डक्स कैसी है भाई, ये रॉयल डक्स है क्या? ये इतनी अजीब सी डक्स क्यों है? मतलब तुम वहां जाओगे मॉन्स्टर जाओगे तो मॉन्स्टर की डक देखोगे इतनी इतनी सी हैं, ये डक्स को देखो इतनी ऊंची ऊंची हैं। इन्होंने क्या अलग कुछ खाया है क्या उनसे? मतलब अलग ही लेवल पे हैं ये डक्स यहाँ पे।
भाई मस्त बनाया है आर्किटेक्चर, कुछ भी बोलो, पता है गेम का आर्किटेक्चर मस्त बनाया है इन्होंने। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ब्लूई लोटस यहाँ पे कुछ करके है, कुछ गेम प्ले आया है। Take it easy. A chest full of valuables. पहली बार में Trove चेस्ट of खोल लिया मैंने। potential clues. वाह भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या यहाँ के ईगल है क्या, ये इतने अजीब से, ये क्या ईगल है क्या यहाँ के, ये ईगल्स है क्या यहाँ के? थैंक्स ईगल। यहाँ अच्छा हुआ इनके बर्ड एग डिफरेंट नहीं है, मेरे को लगा बर्ड एग भी डिफरेंट होंगे यहाँ पे। हाँ हाँ सॉरी डिस्ट्रक्शन हो रहा है गाइस, एक सेकंड मैं जा रहा हूँ वापस। मैं ज्यादा ही कुछ एंजॉय करने लगा था सीनरी यहाँ पे। डक्स ऑन स्टेरॉइड है भाई ये स्ट्रीम के बीच में भी एड्स देखने पड़ रहे हैं क्या? पोकेबॉल कुछ नहीं कर सकते, वो यूट्यूब की तरफ से है ना, एंड ऑब्वियसली मेरा मोनेटाइजेशन उसी से चलता है, तो मेरे को तो रखना पड़ता है। हाँ बस मैंने फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दिया अपनी तरफ से। गाइस मैंने बॉस डक ढूंढ लिया, गाइस मैंने बॉस डक ढूंढ लिया यहाँ पे। ये देखो ये डक्स यहाँ पे व्हाइट कलर की, ये वाली डक्स यहाँ पे ब्लैक कलर की हैं। आई फाउंड द बॉस डक यहाँ पे इस गेम की। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, इसलिए पार्ट 1 खत्म नहीं हुआ चिंता मत करो, हम कर लेंगे, अब स्पीड रन करते हैं, ठीक है। And she is dead. एंड मैं उसका कुछ नहीं कर सकता बाकी एड्स की लेंथ का। मेरे को बेटर लगते हैं जो 30 सेकंड के एड्स आते हैं ना, वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। अभी ये लोग पूरे क्या कहते हैं 15-15 मिनट या 20-20 मिनट के एड्स देते हैं, पता नहीं कौन बनाता है, क्यों यूट्यूब उनको अलाउ करता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। लंबे एड्स होने ही चाहिए यहाँ पे, स्किपेबल भी नहीं होते कुछ एड्स, पता है 20-20 15-15 मिनट के जो एड आते हैं कुछ कुछ तो। सो आई हेट दोज एक्चुअली। Take it easy. वो डक बास्केटबॉल खेलता है। हाँ ब्लैक है तो गैंग का बॉस हो गया रेसिस्ट। ये तो तू ही बोल रहा है सच्ची, हम तो बॉस बोले, तुमने ही रेसिस्ट बनाया उसको, हमने तो कुछ नहीं बोला। तुझे भाई नाइस डिस्ट्रैक्शन। अरे चलता है गाइस, लाइन रास्ते से ही जा रहे हैं ना, पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। चलता है इतना तो, थोड़ा बहुत तो चलता है। एक चीज अच्छी है यहाँ पे फाउंटेन में कि फाउंटेन में भी स्वीट फ्लावर होते हैं, मतलब मिंट फ्लावर और स्वीट फ्लावर दोनों होते हैं। मतलब कुछ हो ना हो यहाँ पे फाउंटेन में, दो चीजें तो होती हैं। एंड मैं बाय द वे ये साइड से कलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9 दिन ही बचे हैं इवेंट को, इसलिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, थोड़ा सा हूँ, बात अलग है, लेकिन इतना भी नहीं हूँ कि मतलब कि ध्यान ही ना दूँ। ये कनेक्ट किस लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसमें इन्होंने क्वेस्ट दे रखा है, तो वो क्वेस्ट कंप्लीट होते जा रहा है साथ ही साथ हमारे एक्सप्लोरेशन के साथ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यू नो इट हैज नथिंग टू डू विथ माय डिस्ट्रैक्शन। 9 दिन ही बचे हैं, करना तो पड़ेगा, मैं नहीं तो भूल जाएगा, अगले वीक खत्म हो जाएगा नहीं तो ये। मॉन्स्टर एंड कूलर मॉन्स्टर। मिंट फ्लावर एंड स्वीट फ्लावर दो बहुत बेसिक डिशेस बनती हैं, स्वीट मॉन्स्ट मैडम एंड एक और जो स्टार्टिंग में ही अनलॉक हो जाती है। स्टार्टिंग में कौन सी अनलॉक होती है? स्टिकी हनी रोस्ट की बात कर रहा है क्या? ऐसे This is fancy. The opera epiclese. What a place to hold a performance. No wonder Linny and Lynette were looking forward to it. गो टू चैलेंज मार दो, इवेंट खुद ही दिखा देगा। वो तो दिखाई देगा डेविस, बट जो चीज़ हम रास्ते में कर सकते हैं, जैसे हमको पता है कि इसमें क्वेस्ट में इन्होंने दिया हुआ है कि सर्टेन नंबर ऑफ एनिमीज मारने हैं पर्टिकुलर टाइप के, पर्टिकुलर काइंड के, या पर्टिकुलर फ्रूट पर्टिकुलर फ्लावर तुमको कलेक्ट करना है सर्टेन नंबर।
तो वो तो हम साथ ही में कर सकते हैं ना, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ डेविस, यू नो। कंप्लीट हो रहा है इसी बहाने मेरा चैलेंज। मिंट जेली, स्वीट मैडम एंड एक मशरूम स्क्यूअर स्टार्टिंग में ही अनलॉक हो जाती है। Huh. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Fontaine is the place of lovers. Vache. ये कौन बोला बे वाशे? किसने बोला इसके कान में? हेलो ट्रैवलर, किसने तेरे को दिया वापस से? पहले नहीडा दिमाग में देती थी बेटी, अब तू किसी और की ले रही है, कैसे बात है? Vache. ये कौन? ये क्या चल रहा है इसके साथ? वाशे वाशर। Did you just say something, Paimon? No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Whose voice was that just now? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette, you scared Paimon. When did you get here? Is this the possibility कि वो जो voice थी वो previous Hydro Archon की थी, and there is a possibility कि she is still alive right now, somewhere in Fontaine? Is that a possibility right now? मतलब हो सकता है, मतलब Lenny asked me to wait here for you, remember? हाँ हो सकता है डेविस, वही बोल रहा हूँ। हाँ पाइमॉन अजीब सी है थोड़ा, पाइमॉन के साथ पता सीन कब का आई ट्रैवलर देख रहा है और वो आके गई, पाइमॉन ऐसे डर रही है खड़े खड़े यहाँ पे। What do you mean? There are a lot of people here right now. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. स्कारा के क्वेस्ट के एंड में भी आई थी वॉइस, वो हो सकती है। हाँ, there is a possibility actually. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. Others in my family have had similar experiences. It's because of her sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? अगर उस पॉसिबिलिटी हो जाता है यहाँ की आर्कॉन के लिए प्रॉब्लम है। Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. That's interesting explanation. I'm not sure whether I can buy it. So, what did the voice say? It seems to be calling out someone's name. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Lenny might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes... Okay, हमको जाना लेनी से बातें करनी है। क्या बोल रहा है शशि? अगर लेनी का नाम डैनी होता और ये परफॉर्मेंस में कोई गलती करता तो कहते भूल चौक लेनी देनी। छी भाई शशि, कितना गंदा जोक था भाई। छी भाई, छी छी भाई। ये क्या आ रहा है यहाँ पे मेरे को? मार्कर किस चीज का मार्कर है? इनका है क्या ये मार्कर? ओ अच्छा,
तो देयर इज अ बुक सिंबल एवरीवेयर जहाँ पे हार्वेस्ट कंप्लीट होगा, विच मीन्स वहाँ के क्वेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, तभी ये बुक्स के सिंबल यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, मेक सेंस, मेक सेंस। अरे देखने तो दो धीरज, मस्त है मतलब क्या होता है। इसका नाम गाइस बीमार है, इस कुत्ते का नाम। नहीं, कुत्ते का नाम नहीं है। अच्छा, बीमार इस गार्ड का नाम है, इस कुत्ते का नाम विकेट है आई गेस। ये पोकेमॉन से लिया है इन्होंने ये कुत्ता, पता है ससी? कुत्ते का ये डिजाइन ना इनका पोकेमॉन से आया है, सिर्फ हेड इन्होंने बढ़ा दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। एग्जैक्टली सेम डिजाइन है पोकेमॉन से। materials required for the events. शशि तू धीरज तू इकलौता है जो शशि की जोक्स पे हंस रहा है, इतने गंदे वाले। तू इकलौता इंसान है। पीछे क्या है यहाँ पे? ये क्या है बे? What is this place? हाँ, this is a chill spot मेरे हिसाब से। मेरे को हाइड्रोक्लस दिख रहा है वहाँ पे ऊपर साइड में। ये क्या जगह है? मैं भी जाके देखूं जरा ये क्या है। ऊपर हाइड्रोक्लस है, ये क्या है? ये खुलेगा क्या नीचे के लिए? ये क्या स्पॉट है? ये दीवार चढ़ने को तुम लोग बोल रहे थे क्या? कि दीवार चढ़ना पड़ेगा हमको? चढ़ लेंगे, एक सेकंड, अभी नहीं चढ़ते, हम बाद में आएंगे। छोड़ो, ये हाइड्रोक्लस भी बाद में ले लेंगे, अभी नहीं चढ़ते। क्वेस्ट में जाते हैं हम, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं तो चढ़ने चक्कर में 4-5 मिनट उसी में लग जाएंगे हमको। क्वेस्ट में जाते हैं। बीमार गार्ड, गिलिटीन फ्लैशबैक फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक काम करो, आज एक्सप्लोरेशन ही कर दो, कल करना आर्कन क्वेस्ट। नहीं। This mythical crystal construct seems to have originally been designed to test dampness of its surrounding, but seems to be can only detect dampness and react accordingly. This situation where continuously affected by hydro may something nice unexpected might occur. ये कौन है बे? एफी। मैं चैट्समैन में पढ़ के मुस्कुराते हो क्या? मेरी चैट मन में पढ़ के मुस्कुराते हो क्या? नहीं सुभाषिस, पढ़ तो रहे हैं हम तुम्हारी चैट, क्या बात कर रहे हो? Traveler in Paimon, good to see you. I knew you two would come. Hi, system running smoothly, Are yes. you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early Welcome to you the stream, by the way, Anime Edits. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now Guys, like is कर the देना, जिन्होंने perfect like नहीं chance किया, for make us sure to to subscribe take you जितने to the stream पे best नए हैं। seats in the house. Wait just a moment. I'll fetch the tickets. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Ooh, front row seats. Thanks, Lenny. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Lenny, could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Best get busy. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lenny.
ये क्या बोला धीरज तूने अभी अभी? कुछ समझ में नहीं आया. Take it easy. Go to the seats. What if I don't go below? If I go up from here? What then? खुलेगा ये गेट? वो खुलेगा भी? मेरे को लगा खुलेगा नहीं. ये गाना इतना इंटेंस क्यों बज रहा है? I'll make the entry of child guys. अब मैं चाइल्ड की तरह एंट्री करेगा. देखो तुम यहाँ पे एंट्री करेगा मैं चाइल्ड की तरह यहाँ पे. अरे बॉल्स क्लाइंबेबल ही नहीं है. स्कैम हो गया मेरे साथ. मैं इसकी आँख मेरे को लगा बॉल्स क्लाइंबेबल है. बॉल्स क्लाइंबेबल ही नहीं है. थैंक यू फॉर दिस सीट. Take it easy. आई गेस आगे वाली सीट पे ही जाना पड़ेगा. Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. There is nobody here in the theater. That's weird. Hey, ये कौन है बे? ये कौन है बाजू में? Weird. यहाँ पे देखो awkward हो गई सिचुएशन गाइस. ये awkward हो गई सिचुएशन यहाँ पे. Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's kind of awkward if we don't say anything. You are up, Paimon. You little... Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh! Unavailable है ये. So you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk. But what should we talk about? This is getting even more awkward. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? कुछ भी बोलो इसके कपड़ों का डिजाइन बहुत सही है. कपड़े और हेयर का डिजाइन बहुत सही है ये. निवलेटे का. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived in Vaudain. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tevat. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me क्या चल रहा है to see चैट your में? performance in एनिमे person. रिपीट कर रहा है बाकियों की लाइन से. क्या चल रहा है चैट में? Nervillet? Karibi. किसने गाइस किसने अपना बॉट यहाँ पे I चैट saw में you छोड़ all दिया? जरा chatting just बताओ. now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Ooh, sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to, there's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. हाइड्रो आर्कॉन यहाँ बैठी हुई है. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Huh?
So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! Crowds enter the venue and curtains opens to the show to begin. Oh, they're dimming the lights! Bye-bye, the show Anime must be Red. starting! Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Cutscene enjoy karo guys Now, abhi. some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh.
That was impressive actually. भाई that was impressive to be honest. ये तीनों एंजॉय करने वाले हैं क्या? नहीं, बाकी लोग भी आ गए. So was is Nevlede is little more powerful than Hydroacon. That's what people are saying. देख, Nevlede का अलग रोल होगा, Hydroacon का अलग रोल होगा. So बस तो there is no way you can compare those two. मीम पेज पे एक मीम डाला था मैंने इनके बारे में, देख खोलो. नहीं देखा मैंने अभी, मैं अभी नहीं देखूंगा, बाद में देखूंगा आफ्टर स्ट्रीम. हाँ, नाउ सो टाइम. इतना नीचे देखेंगे कैसे सो दिखेगा? कुछ नहीं, ट्रैवलर इतना नीचे बैठी है. अब वही जाने भाई, वो लोग देख रहे हैं शशि, हमको तो परफेक्ट कैमरा एंगल मिला ना. यस, आई कांट इवन वॉच योर स्ट्रीम बिकॉज ऑफ स्पॉइलर. तो हरी साहब अपने गेम में जाके स्किप कर लेना क्या कहते हैं डायलॉग्स और कट सीन, यहाँ पे एंजॉय कर ले. मैं तो बोलूँगा क्यों करना है गेम के अंदर, मतलब यहाँ जब हम स्ट्रीम पे खेल रहे हैं गेम, तो स्ट्रीम पे गेम प्ले देख ले, कट सीन देख ले, और वहाँ जाके स्किप करते रहना अपने गेम में. तेरा टाइम बचेगा एटलीस्ट. दोनों साइड क्यों करना है? No wonder he is a famous magician. If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. Don't tell there me it's are Paimon. 2 boxes and only 2 boxes. One is here and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap! Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. मतलब कट सीन के अंदर भी आरएनजी डाल दी इन्होंने. मतलब नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला. पैरालैक्स क्या सुन रहे हो तुम? और हरी साहब मत जाओ ना, देखो ना स्ट्रीम, कहाँ जा रहे हो? एंड वेलकम टू द स्ट्रीम पैरालैक्स. आई विल ट्राई टू डू द होल स्टोरी टुमारो. हाँ, इतना इजी है ना हरी साहब, इतना इजी है भाई. ये आरएनजी इन्होंने कट सीन में भी डाल दी, मतलब है सही है भाई. यही वजह जिंदगी में. Let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. एक सेकंड, इज दैट द सेम गर्ल वो जो कि वहां पे क्या कहते हैं फाउंटेन में स्टैचू ऑफ 7 के पास चीजें स्टील कर रही थी? ये सेम गर्ल है क्या वो? मेरे को ये जानना है. ये वही लड़की लग रही है जो पता है फाउंटेन में हम जब एंट्री किए थे और लेनी से बात कर रहे थे उस टाइम ये क्या कहते हैं आई थिंक चीजें स्टील कर रही थी लोगों के पॉकेट से. आई थिंक शी इज द सेम गर्ल.
You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of Meropide. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh! Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that! I'm so Lenny is prepared. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58! That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. हो सकता है, धीरज. 54, 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Nervalet? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Mr. Lenny, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25! 24! 23! What's wrong, Mr. Lenny? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19! 18! 17! It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da!
वेट वेट, उसने गलती से उसको मार दिया। रियली धीरज, किस कहाँ देखा, कब देखा था? ओ भाई ये क्या हुआ अभी अभी थोड़ी देर पहले? इट गेव मी अ गूज बम्प। ये क्या हुआ एकदम से? वो गिर गया, टैंक गिर गया उस लड़की के ऊपर। वाज दैट अ पार्ट ऑफ मैजिक और इज शी रियली किल्ड यहाँ पे कट सीन में? एंड सही बात बोला तूने शशि, बकबक करके परेशान करती कि निवलेटे तो ऑलरेडी परेशान हो चुका है पाइमॉन से। भाई ये क्या हो गया? ओ लैनी को ट्रायल में खड़ा किया जाएगा ऐसा लग रहा है। नहीं, या फिर ये मैजिक का पार्ट हो सकता है कि रियली में ऐसा दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली में कुछ और होगा। जादूगर सम्राट नेम्ड मैजिशियन का शो था, गया था स्कूल वाले। अच्छा जादूगर सम्राट वाला, हाँ हमारे यहाँ भी आता था, मैं भी गया हूँ टू बी ऑनेस्ट, देखा हूँ। Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Wait. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. I think it was done by that girl. And Cowell means इसका जो वो था, क्या कहते हैं, असिस्टेंट था, वही मर गया है। ओ भाई, इन्होंने रियली में मरवा दिया रियल पर्सन को। उसके रियल पर्सन ही मतलब एनपीसी को गेम के अंदर, मतलब वो भी कट सीन के अंदर साफ साफ। ओ भाई ये क्या हो गया? एंड आई थिंक मेरे को लगता है यहाँ पे किसी ने तो गड़बड़ की है इनके इक्विपमेंट्स के साथ। मेरे को लगता है उसी लड़की ने की होगी, क्योंकि वो लड़की अभी भी नहीं दिख रही है। And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. In front of audience, including Archon chiefs and chiefs of I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale, did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linny, is now the prime suspect for the serial disappearances case. But... Huh? Why me? This whole thing was an accident. Wait. नहीं धीरज देख, लेकिन टैप पे जब मारा था तो वो बुढ़ापे की वजह से मारा था, ठीक है, लेकिन इन्होंने कोवेल को लिटरली क्रश करके मारा है। तुम समझ रहे हो? मतलब ऊपर जब वाटर टैंक था वो गिरा है उस पूरे उसके अंदर, और लाइक पूरा क्रश करके मारा है कोवेल को उन्होंने। तो समझ रहा है मतलब धीरज तू बात को? तो ये बहुत गंदे तरीके से मारा है एनपीसी को इन्होंने पहली बार गेम के अंदर। हाँ, अर्कोन को मजा आ रहा है इसमें। Oh, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? भाई दिखाते तो The deceased is one of your assistants, is he not? अगर ये लोग दिखा देते ना धीरज बोल रहा शशि,
तो ये लोग इनका गेम ना 13 प्लस की जगह 18 प्लस होता, पता है धीरज, और कई जगह बैन हो चुका है होता है ये कट सीन की वजह से। इट वाज सो ब्रूटल एक्चुअली। It was a murder and done by somebody else to frame Lenny, I guess, मेरे हिसाब से। मे भी उसी लड़की ने किया है। Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Lenny do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. He is a suspect at most. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates, and that you are pressing charges? Huh? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. भाई ये आर्कॉन कैसा है भाई? इससे अच्छा तो नेविलेटर लग रहा है कि भाई आर्कॉन है बंदा, देख के उसके एटीट्यूड से। उसको फुरीना को कोई देख के बोल सकता है आर्कॉन है, जिस तरह से वो बातें कर रही है, हरकतें हैं जैसे उसकी। मस्त प्लॉट ट्विस्ट है एक्चुअली में बात। A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, traveler. You'll support Lenny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. But with Lenny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. भाई ये पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये फुरीना जो है ना, सबसे ज्यादा ट्रैश आर्कॉन है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। ये आर्कॉन ना सबसे ट्रैश है, फुरीना वाली। इसके अलावा जितने आर्कॉन हम मिले हैं, मॉन्स्टर्ड से तुम्हारा लियुए, इनाजुमा और क्या कहते हैं सुमेरु में, सबसे गंदी आर्कॉन यही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसकी एटीट्यूड ऐसा है ना, इसकी बात करने का तरीका ऐसा है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। 500 साल ही रूल, 500 साल से कम रूल किया आई थिंक ससी। नहीं ससी, बीच बीच में आवाज भी आई है ट्रैवलर को, उसी की पुराने आर्कॉन की आवाज आई है, तो आई थिंक पुराना आर्कॉन जिंदा है लेकिन समवेयर ट्रैप्ड है। It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Yes, I am. Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Think अगर ये चीज पता पहले हो जाती तो वो लेनेट मर जाती। Linney and his troop are all potential suspects and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big-shot outlander can build in such a short amount of time.
I'm really quite looking forward to hearing it. Lenny! लिनी वैसे भी दुख Sorry में about होगा बंदा. everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? भाई तुमने एक चीज नोटिस की तुम में से किसी ने. मतलब इतना बड़ा कांड हो गया और लेनी के इतना क्लोज वाला असिस्टेंट कॉवेल मतलब मर गया. कोई रो नहीं रहा यहाँ पे. दुख नहीं है किसी को, ऐसा लग रहा है. मतलब थोड़ा सैडनेस है लेकिन ऐसा नहीं लग रहा किसी को दुख है. मतलब कोई रो ही नहीं रहा, लेनी रो ही नहीं रहा उसकी डेथ पे. मतलब ऐसा लग रहा है बड़ा कैजुअल है, होता रहता है, डेली का काम है यहाँ तो फाउंटेन में. ऐसा लग रहा है इनको देख के. I know, Davis. Yeah, I'm a little shaken up myself. बोला है, देखो बोला है How could ससी, this लेकिन happen? जरूरी नहीं है हर चीज And ट्रू हो. poor सबको हर चीज cow. पता नहीं होती है. देयर आर सीक्रेट्स एज वेल गेम के अंदर विच विल रिवील यू नो बाद में जब हमारा ट्रैवलर वहां पहुंचता है. तो शॉक्ड है लेकिन दुख होना चाहिए ना सबसे ज्यादा तो कि मर गया बंदा, मतलब उसका क्लोज वाला. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. किसने And बोला I न्यू don't था? know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. But there is no denying what happened. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. वेट ये क्या हुआ? पाइमॉन को ग्लास कहाँ से मिल गया? कितनी अजीब सी लग रही है पाइमॉन इसमें. कितनी अजीब सी लग रही है पाइमॉन इसमें. मतलब कितनी अजीब सी लग रही है. न्यू बताया था, न्यू नहीं बताया था. आई थिंक उसने बोला था सिर्फ असिस्टेंट है मेरा कोवेल. पाइमॉन भी हमारी मैजिशियन बन गई है गाइस. कांग्रेचुलेशंस. पाइमॉन भी मैजिशियन बन चुकी है. एक सेकंड देना, पंखा चालू करके आता. और सोचो अगर ये लोग अगर क्या कहते हैं गलती से नंबर ट्रैवलर की सीट का आ जाता और ट्रैवलर उस बॉक्स के अंदर होता, सोचो क्या सीन होता. पाइमॉन मैजिक न्यू नहीं बताया, अभी ले लिया. जस्ट सेइंग. आगे ला बोल दिया. बोला ना न्यू नहीं बताया ना, बोला ना बस मैंने. न्यू नहीं बोला उसने बोला है सिर्फ जस्ट मेरा असिस्टेंट है. उसने ये नहीं बोला न्यू है. ऑलरेडी प्लान्ड है. उसको लैनी को फ्रेम किया जा रहा है किसी और के द्वारा. डेविस ऑब्वियसली. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self.
But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Yes, thank you so much. I won't let you down. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Oh, well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Hello, officer. How's the investigation going? ये बंदा मर गया और क्या बात कर रहे हैं? अरे बताया नहीं है अभी, बट है तो न्यू, सो रोना कहाँ से आएगा भाई? बताया नहीं है तो सुबह से तू अज्यूम कैसे कर रहा है कि न्यू है बंदा? एंड अगर आगे क्वेश्चन बताएगा तो मत बता, फिर वो फायदा नहीं है अज्यूम करने से हमको। I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. मैं जाता कल सुबह उठना है। बाय बाय, गुड नाइट सुभाषेश। It will spoil the fun of getting curiosities in mind. I got 53 hour of Genshin walkthrough in recommendation. लमा वो कोई नहीं देखेगा 53 आवर का गेम प्ले धीरज। But why was Cobble inside? This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive! Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. But that's not always true. People can also be most reliable evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. You can use case record to confirm your current evidence and clue collection situation, sort case related information.
You can check as yet undiscovered evidence and clues in the case record, then investigate the corresponding area to locate them. Use perception skill to find evidence and clues that can be investigated within a certain radius around yourself. This will advance your overall progress. Guardes investigation report. Okay. However, the reason for the victim being Cobble and the reason for chosen lady disappearing remain mysteries. Deceased identity. Lenny's assistant named Cobble. He was well trusted by all his colleagues. His job was setting and instructing the prop as well as assisting with the show, keeping the crowd engaged. Detective and action. बट एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, पता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है. पायरोटेक्निक्स इधर हैं, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा केस इधर पे है और ये लटका इधर से होगा, तो हाउ द हेक पायरोटेक्निक्स ने इसको जला दिया? मेरे को ये जानना है. मतलब उन्होंने एडजस्टमेंट तो उसी हिसाब से किया होगा ना कि पायरोटेक्निक्स जलाए ना चीजों को. कैसे जला दिया? So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Exactly. So either Lainey didn't realize this was a safety concern. Why are you suddenly so serious, Trevor? Or maybe it was burned by somebody else using the vision. Yep, it was used by... Look! This bit is made from different material! Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. It seems to be flammable. Huh. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... It was replaced. Why don't you write all this down? Let's take notes. Exactly. It was replaced actually. पहले और इनको पता नहीं लगा. ये ब्लड का एक स्पॉट भी नहीं है. रियल में इतना बड़ा वाटर टैंक गिरा तो खुरपी से कुचरा के निकलना पड़ेगा. भाई तो इन्होंने सब साफ कर दिया होगा ना शशि, इसलिए. हाँ बस हमको इतनी इंग्लिश आती है कि पायरोटेक्निक मतलब क्या होता है. ठीक है, ठीक है, फिर इंग्लिश के चौधे मत बनो अभी बैठ के. गेंद मार लेंगे हम, सच्ची बता रहे हैं. बस तो किसी ने यहाँ पे रिप्लेस किया था मटेरियल, किसी ने रोप रिप्लेस की थी और इनको रियलाइज नहीं हुआ. या तो कोई विजन वाला यहाँ पे बंदा आया था, मेरे को ऐसा लगता है, और उसने लाइक अपने विजन के थ्रू वहां पे फायर जला के उसको बर्न किया. किसी को मालूम भी नहीं चला कि वहां पे बर्न की जा रही है रोप एक्चुअली. Hello there. What are you investigating? Pyro से ninja technique. Oh, this location has also been cordoned off because the magic troupe members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Could you tell us who is he? Sure. It's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The magic troupe members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the magic troupe at all, which matches the features of the previous serial disappearances. There is also a possibility, पता है? there is also a possibility कि अबिस का वो पोर्टल अपीयर हो और लाइक उसमें से कोई निकले, ऐसा मतलब भूखा सा राक्षस, और वो
मतलब उसको मजा आ रहा हो इस एज की लड़कियां खाने में। नहीं, तुम लोग वो देखे होगे क्या कहते हैं, डीमन स्लेयर देखे होगे, उसमें रहते हैं डीमंस ऐसे जो इनको खाते हैं, यू नो पर्टिकुलर एज वाले को, तो उनको पसंद आता है क्योंकि स्वाद। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है मेरे को लगता है गेम में। आप डिटेक्टिव मत बनना सुझा भाई। क्यों भाई, क्या दिक्कत है उसमें धीरज? मैं बनेगा ना जब तू फंसेगा धीरज। I'm missing one more information यहाँ पे। That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. Thanks for letting us know all this. No need to be so formal. If you do happen to, it is of utmost importance that Information about the missing lady's identity. तब तो मेरा जेल सेंटेंस बढ़ जाएगा उल्टा। चलेगा ना धीरज? मेरे को तो चलेगा, आई गेस। मेरे को चलेगा। The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? You're trying to help them? That'll be a tall order. Linny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Linny reserved our seats for us too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Thanks, sorry to bother you. Even though it's bad for Linny's case, Paimon had better write it down. Random number selector. Someone has tampered the random number selector. It looks like an ordinary box, but Lenny somehow moved instantly from the stage to being inside of it. How did he do it? Eslador. I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Then wouldn't the water tank have started swinging a bit in that case? That's true. I suppose I must reconsider.
This is going interesting to be honest. मेरे को ऐसा लगता है. तो थर्ड का कुछ लेना देना है. Lenny's still talking to the guards. I think someone will be assigned. मेरे को नोटबुक कैसे दिखेगी कि क्या क्या कर लिया हूँ मैंने? अभी बोल रहा कुछ नहीं, आगे देखो. Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a while now. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. इसका नाम अच्छा है, नाविया सिंपल सा, बाकियों की तरह नहीं है, अजीब Those सा. who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Yep, she is good looking actually. She is good looking and she has a pretty decent and simple name. बाकी कंपनी का नाम थोड़ा अजीब सा है, रोज करके. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the name? सर्वल आ गई. Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? वाह फ्रैगर वाह. Intuition, naturally. देख रहे हो धीरज? My unparalleled intuition. देख रहे हो धीरज तुम? कैसे डॉक्टर बनोगे वे धीरज? तुम इसको सलाह नहीं देते हो फ्रैगर को? मतलब दवाई पी के चॉकलेट खा के लिम्का कौन पीता है खांसी की? Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. Well, when you put it like that. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did
user count. Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? Not always. And why would that be? Doing so make it easy for the truth to fall by the wayside. See, Silver and Maloose? I told you they'd be different. Most astute of you, demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Maloose. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant, sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. पाइमॉन को लीडर बनना है, देख रहे हो तुम? पाइमॉन को लीडर बनना था तो उसको कंपेनियन बना ली, उसको असिस्टेंट बना ली. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations Paimon first. being Paimon. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Thanks! Look for the clues inside the opera house. Sorry, but no one can freely enter or Main exit event the aa opera house at the chuka hai na, moment. Fragger. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes. After the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that What point about on. during the show? I doubt there was much opportunity then either. How can you be so sure? Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melusines are good at that sort of thing, you know. ये मेरे को एक चीज जाननी है, ये इन्होंने सही किया भाई, फिर अब इन्होंने आरा नहीं किया इसमें. ये मिलिसिन देखो कितने नॉर्मली इंसानों की तरह बोल रहे हैं, ये जानवर जो हैं यहाँ पे फाउंटेन के, और लाइक लोगों के बीच में लिव कर रहे हैं. वहाँ आरा गए थे भाई, आरा कर रहे थे पूरे टाइम. कितने सही हैं ये लोग. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. है तो फ्रैगर गेम के अंदर, जाके देखो. 9 दिन ही बचे हैं उसको. Alright, thank you for your help. This'll be... We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? एक सेकंड, कहाँ गया क्वेस्ट का वो बुक? कहाँ गई? चाइल्ड्स विजन हमारे पास क्वेस्ट आइटम है. Whoever the murderer was, why would it be him? यहाँ पे अभी भी 5 कन्वर्सेशन मिसिंग है भाई.
5 कन्वर्सेशन अभी मिसिंग है. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. ये I'm a इत्तो partner जैसी है, of पता है, theirs, and we'll be action देके helping बोलती है हर investigate चीज. this whole situation. ये पता है इत्तो जैसी ही है, मतलब हर चीज एक्शन देके बोलना है इसको पहले. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? क्या strange है यहाँ पे? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. There is a tunnel. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. The back of the door isn't the same. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? There is a box and another box inside this one. Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box! And this patch is linked to the 2 boxes together. I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. तभी वो थंप की आवाज आ रही थी. इसने बोला था कि there was a slight noise थंप जब काउंटिंग हो रही थी, थंप की आवाज आई थी. Because of this actually, क्योंकि boxes move हो रहे थे. Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. I know, Fragger. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh,
Interesting. That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked. Wow. Every detail you revealed was more amazing than the last. कोई नहीं. I can tell a lot of thoughts was put into this. Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. Magic trick. On stage magic box structure. Audience side magic box structure. भाई interesting चल रहा है. This should be the control device for the trolley, and it seems to be able to operate automatically. मेरे को एक चीज जाननी है, ये बॉक्सेस और तुमने ये नोटिस किया है यहाँ पे ये लैडर जो है और यहाँ पे जो रेल है ये थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा कैसे इन्होंने बॉक्स मूव किया होगा थोड़ा सा. What's this? An anchor type है. Hook tied to the end of a rope. Huh? Lenny didn't mention this earlier. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a... The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be Maybe it was here? for a trick. Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear. And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Broken flower vase. किसी का कपड़ा पड़ा है यहाँ पे. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Lenny didn't mention the guest having wardrobe change. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. एक सेकंड, ये पाइमॉन का चश्मा चेंज हो गया क्या? Young ladies clothes. Interesting चल रहा है बे. Examine the tracks. High precision required to complete the magic, so tracks are perfect for making the trolley stay in the designated course. There must be a hidden door यहाँ पे कहीं पे. ठीक है फ्रैगर, ठीक है. नॉर्मली बना दिया करो वैसे ही.
Looks like a It band. seems someone could fit through here. Huh. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. Other than those that go through the magic boxes. Oh, you're right. Let Paimon write that down. Return Seems to the we're surface. just about done investigating down here. Yes. Let's head back up. हाय ओमकार, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। जिसने लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस स्ट्रीम को, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे नए हैं। एंड क्या बात है ओमकार, आज लेट है स्ट्रीम पे? Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. It seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait, demoiselle. So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. All missions done. क्या In बात other कर रहे हो? पूरे words, the अर्कन को इसका लिया charges होगा। are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर लिया एक दिन में। Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. And not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the oratrice as a reference. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Novelette called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment. Which is why people have great faith in the Chief Justice. Yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. There are actually two things missing over here and two things missing over here यहाँ पे टनल में। आइटम सारे मिल चुके हैं जबकि They're concerned that we might be colluding with outside parties. मैक्स है 5 to 7 और मैंने outside सब help to डायलॉग disrupt your पढ़े नो case. स्किप। And even if that were not so, it could prove problematic if we Did you happen to enjoy the spread story, key by information the way, about the Omkar? case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa! There's no need for that. Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. No, not the time to be picky. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding, just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But how? Understood, demoiselle. Everyone, please come with me.
Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. Must be the spina di rosulia thingy. Neverly methodically handle the ingredient. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven. Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. मेरे को एक चीज जाननी है, ये इतना बड़ा स्टोव ये लोग हाथ में लेके कैसे घूम रहे हैं? I hate this game. Why, Elementless? Why? मेरे को ये जानना है, इतना बड़ा स्टोव ये हाथ में कैसे लेके जा रहे हैं? मतलब साथ में कैसे लेके घूम रहे हैं इतना बड़ा स्टोव? और रही बात तो क्या कहते हैं, मतलब इंग्रेडिएंट्स भी लेके घूम रहे हैं, मतलब गजब है भाई, पॉकेट इतनी सी और इतना बड़ा मतलब स्टोव लेके घूम रहा है. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. क्यों Elementless से तो बताओ. Don't underestimate beating egg weights, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. यूला में 70 रेजिन लगा दिया और 64 CR और यलान को का अभी भी 72 CR हो गया है without even using resin. तो उसमें दिक्कत क्या है? तो इसमें हेट करने वाली बात क्या है? मेरे को ये जानना है. Anyway, give these a try. I thought गेम नहीं खेल पा रहा इसलिए हेट कर रहा है. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite, strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. Why don't you take a break as well? No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. Hi Kai, welcome to the stream. बहुत रात में आए हुए 1:30 के आसपास. बुरा है क्योंकि मैंने यूला को प्यार दिया और धोखा मिला. मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि यलान तेरी यूला से पहले बिल्ड हो गई, ऐसा मतलब एलिमेंटलेस. भाई देखो वो तो लक की बात है ना एलिमेंटलेस, उसमें प्यार की क्या बात है? मतलब तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी थी यूला की, मतलब धोखा मिल गया तेरे को. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? We are left with two people, missing girl and the deceased. The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Yo देवांश राजपूत, वेलकम टू द स्ट्रीम. मैं खेल रहा था गेम्स. अच्छा गेम्स खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे काय? Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is there is no evidence that this third person even exists. True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But the only people left to consider are both technically victims. Whether it's the missing girl, Halsey, or poor Callum. मैं तो भाई स्ट्रीम पे ऐसे ही कैचअप कर लिया तुमसे एलिमेंटली, मतलब बिना खेले. बकचोदी काटते काटते. Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape?
But she had no way of knowing how the magic trick works. That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the magic troop's members. Were we not thorough enough in our search? रॉकेट लीग खेल रहा था, फिर बैलो, फिर कमीशन किया, फिर आ गया वाईटी पे। कुछ ज़्यादा ही लंबा खेलिए लगता है रॉकेट लीग और बैलो का है। फ़ोन में नहीं खेला जाता, मेरे से मज़ा नहीं आता छोटी स्क्रीन पे। समझ सकते हैं हम एलिमेंटलेस पीसी वाले हो ना, फ़ोन में कहाँ मज़ा आएगा। From the sound of things, this is turning into an impossible case. Once you play on the PC, you will never go back to phone. Elementless, remember that. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great. 5-6 घंटे। They're nice and crisp and super sweet. टेलर स्विफ्ट की एंट्री हो गई अब। They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3. Honest. Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? फोन का तो कोई काम ही नहीं है। फोन आने के अलावा कोई काम ही नहीं है काहे। मैं तो फोन को व्हाट्सएप के अलावा यूज भी नहीं करता। मेरे पास फोन में 2 गेम है, उनके अलावा मैं फोन यूज ही नहीं करता हूँ। कॉल भी बहुत रेयरली आते हैं। If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach. All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Or there is really no need to do that. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? मेरा फोन तो बस इंस्टा के लिए है। Well, that's इंस्टा it पे क्या for देखते snack हो? time. काय किसकी I'm चैट going to पढ़ते have हो? another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. All right. Thanks for your help and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. Probability of third person being involved. पाइमन ने मुंह पे प्रॉप पहना है कोई सी टाइप का। We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult. मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे। कोई मुझे ये समझाओ कहाँ गया? अरे कहाँ रहता है? कोई मुझे ये समझाओ ये क्या है? I have no idea। ये कहाँ से आया? प्रिंसेस क्यूबाज इन इंटागोलिया। I have no idea ये कहाँ से आया? कोई मुझे ये समझाओ। Why would it be him? यहाँ पे एक कन्वर्सेशन बची हुई है और यहाँ पे 2 कन्वर्सेशन बची हुई है। ऐसा क्यों? अभी खुलेंगी क्या ये? Gosh, no wonder the serial disappearances never got solved. We all heard that noise, didn't we? डिस्कॉर्ड आ जाया करो का है। हम लोग तो बैठे रहते हैं डिस्कॉर्ड में शाम को, बकचोदी काटते रहते हैं। पिंटरेस्ट में क्या देखते हो तुम सुबह से? ये बताओ। The performance would not have been visible from where the I guess doors you were are the only person guarded. here in the chat जो Pinterest खोल के देखता भी है। If Paimon were on duty, she would have snuck back into the audience seating. Well, there was no chance Paimon could have seen that the box had 2 layers. And that's why only the 2 of them can perform. There was no third person.
And Paimon didn't eat more than 3 macarons. Digging a tunnel just for a magic that size wouldn't have been a problem for Paimon. Navigating the world. Still investigating for trial, yes. Check Paimon's notes. They should help you review the situation. खेल सकता हूँ मैं, इंस्टॉल करता नहीं। और एक्चुअली दिन में काम रहता है ना, तो दिन में काम के टाइम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सैटरडे संडे में खेलता हूँ। पूछो उससे क्या कहते हैं। अभी हरी साहब है नहीं चैट में, एक्चुअली हरी साहब से पूछ सकते हो तुम। मैं उसके साथ अभी एक दिन कोऑप गेम खेल रहा था, क्या नाम था उसका, डेड आइलैंड 2। हाँ, डेड आइलैंड 2 खेल रहे थे हम लोग साथ में। मैं खेलता हूँ ऑब्वियसली। कुछ गेम्स इंस्टॉल नहीं है लेकिन है मेरे पास। कुछ गेम छोड़ दिया हूँ, मज़े नहीं आते क्योंकि अकेले खेलने में। बट इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ नहीं कहा है, अभी नहीं सोची, क्योंकि ऑडियंस जेंसन वाली है ना। फिर जेंसन नहीं खेलता जिस दिन, तो फिर क्या कहते हैं सब्सक्राइबर लॉस होते हैं, तो इसी वजह से मैं जेंसन नहीं खेलता हूँ स्ट्रीम पे। ऑफ स्ट्रीम खेलता रहता हूँ कुछ भी है। मैं बोला हूँ डिवॉवर करो, मजा आएगा। कोऑप है 4 प्लेयर का, देखना पड़ेगा डिवॉवर में। देखा नहीं, तू डिस्कॉर्ड में मेरे को पिंग भी नहीं किया एलिमेंटलेस गेम का नाम। आई डू हैव सम थॉट्स। Good plan. Impossible things don't just happen. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stand. Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Best of luck to you. ठीक है, ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. No. We're already very grateful that you were willing to help. Well, now, फिर से don't मेरी you चैट मन में all करके look सीन करके छोड़ दिया। disappointed. Don't tell me that पढ़ा your तो तेरी Pinterest is really good for aesthetics, मुझे समझ में नहीं आया। That was to be expected, क्या of था course. aesthetics wise? The guilty can never produce proof of their innocence. But don't let that stop you. I shall be terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. Since both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please have Mr. Linney explain the trick? Yes, of course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Linney is clearly lying. क्या बोल रहा है फिर? Aesthetics for decoration or outfits, plants, something like that. But तू करता क्या है Pinterest में? मतलब aesthetics बस यही देखता है क्या? Decoration, plant और क्या कहते हैं आउटफिट्स देखता है क्या सुबह से तू? और क्या करता है Pinterest में? मतलब कुछ तो होता होगा, मैंने कभी चलाया नहीं Pinterest, तो मुझे आइडिया नहीं क्या होता है Pinterest में। तू ही बता क्या होता है Pinterest में। There is no way you could have been in the box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud.
One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Wait, does that mean हाइड्रो आर्कॉन सभी लड़कियों को किडनैप कर रहा है? यू आर राइट, पर लाइक वीक में एक डे कोई दूसरी गेम खेलता हूँ ना, संडे के दिन खेलता हूँ दूसरी गेम। काय संडे नहीं खेल रहा था मैं डिफरेंट गेम, वो नहीं खेल रहा था, क्या कहते हैं फार क्राई नहीं खेल रहा था मैं इस संडे। खेलता हूँ ना संडे के दिन खेलता हूँ डिफरेंट गेम, बाकी दिन तो खेलता हूँ जेंसन में। इट्स लाइक यू विल सी द स्टफ्स रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट इन स्लाइड्स। आई सी, बेसिकली पिक्चर्स देखते हो तुम वहाँ पे। How could Lenny not know about that sound? Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. सजेस्ट करोगे काय गेम्स तो हम तो खेलेंगे, हमको प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रीम पे। सजेस्ट करना पड़ेगी लेकिन गेम तुमको, उसमें क्या है, सजेस्ट करोगे हम खेल लेंगे स्ट्रीम पे। मतलब गेम अच्छी होनी जरूरी है, जैसे इन लोगों ने कई बार सजेस्ट किया, जैसे वो लिटिल नाइटमेयर करके, वो मैंने खेली है, पहला पार्ट भी सेकंड पार्ट भी खेला स्ट्रीम पे संडे के दिन। तो ऐसे गेम सजेस्ट करोगे तो मैं खेलूंगा काय और एलिमेंटलेस, बट सजेस्ट तो करना पड़ेगा ना। Of course, I have armed myself to मेरे को वैलो इसलिए नहीं पसंद है, वैलो में पता वो फिर गुस्सा आने लगता है, रेज आने लगता है, क्योंकि इसलिए मैं खेलता नहीं वैलो। सबसे बड़ा रीजन यही है, ये तो मैं खेल तो रैंडम्स के साथ भी लूंगा। मेरे को एपेक्स लेजेंड सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन वही है अब सर्वर नहीं है और हाई पिंग पे खेलना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एपेक्स लेजेंड। प्लस कोई खेलता भी नहीं रहा, तो बहुत खेला हूँ तो मन उठ गया था मेरा। एक टाइम बहुत पीक पे भी पहुँच गया था एपेक्स लेजेंड में, तो उसके बाद बंद ही कर दिया खेलना। Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? What is House of the Hearth? The House of the Hearth? They are Fatuis? No wonder they did something like this. Fatui हैं ये The लोग। serial disappearances were the Fatui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Now it totally makes sense. नहीं, खेलने के लिए खेल सकता हूँ काय, ऐसा नहीं है वैलो, बट लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि मैं अच्छा नहीं खेलूँ पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो हाथ नहीं बैठ रहता ना, एम की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, काफ़ी अच्छे बंदे आते हैं, तो इसी वजह से मैं खेलता नहीं हूँ पहले। फिर बाकी खेल सकता हूँ मैं वैलो भी, ऐसा नहीं है। मेरे को मोस्टली बैटल रॉयल, स्टोरी गेम्स, ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन गेम्स ज़्यादा पसंद है देन हॉरर वंस एक्चुअली, बट खेल सकता हूँ हॉरर वंस एज लॉन्ग एज इट्स समथिंग विच इज़ एक्चुअली टेलिंग अस व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ जस्ट डू एंड फाइंड बाय योर सेल्फ थिंग, यू नो, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। फिर एक सेकंड, इन्होंने अभी बोला दे आर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ हार्ट, विच मीन्स इनको भी डॉक्टर ने ही बनाया है, इन दोनों को, इन दोनों रोबोट्स को भी। दैट्स स्ट्रेंज, ये क्या ट्विस्ट आया है इन स्टोरी में। Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. देख रहे हो अब हाइड्रो आर्कन कितना मनी मन खुश है। Almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off.
इसने नाइट में क्या किया है हाइड्रो आर्कॉन ने? ओवरवॉच खेलो, मैं वही खेलता हूँ, उसमें रैंक ओपन करता है बट देन सेल दैट अकाउंट फॉर 3000। मुझे यही नहीं पता ओवरवॉच में, मेरे को आज तक समझ में नहीं है करता क्या है आदमी। पूरे टाइम जंप करता रहता है, गोलियां चलाते रहता है पूरे टाइम। मुझे आज तक समझ में नहीं है करता क्या है आदमी ओवरवॉच में, सच्ची बता रहा हूँ एलिमेंटलेस। टू बी ऑनेस्ट। Hey, Lenny, why didn't you tell us this before? Lenny, Lennets are fatui. Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? There is no doubt of magician's ability to con others. Given how Lenny has concealed his identity, this could all be in a setup beforehand. Plus, Child is here in Fontaine along with other house operatives. There must be some schemes at work here. I have been a victim of such schemes before and now. Please answer my question, Mr. Linney. You can say it's a copy of Valorant, like PUBG's copy is free. नहीं, लेकिन Valorant में एक्चुअली तुमको पता तो होता है कर क्या रहे हो तुम एलिमेंटलेस। मेरे को आज तक ओवरवॉच में समझ में नहीं आया, आदमी जंप करता रहता है इधर से निकल के उधर से गोलियां मारता रहता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं करता क्या है आदमी पूरे गेम में। इतना पता है रोल्स होते हैं ओवरवॉच में, क्योंकि मैंने थोड़ा खोल के देखा था ओवरवॉच 2, लेकिन फिर खेलने वाला कोई नहीं था और इंटरेस्ट नहीं था ऑडियंस का, तो फिर मैंने खेला नहीं ओवरवॉच 2। तो मुझे समझ में नहीं आया ओवरवॉच क्या करते क्या है। डिफरेंट टाइप के गेम मोड है ओवरवॉच में। Yes, they're true, Your Honor. I knew it! Well, that's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Permission to speak, Your Honor. Granted. My client has withheld some key information. In that case, what is your request? I request a brief adjournment. There are things that must be discussed. Is that really necessary? They're already as good as guilty. The defendant deceived their own attorneys. What is there left to discuss? हाँ, then एलिमेंटलेस बात तो सही है, पैसे मिल रहे हैं तुमको खेलने के, लेकिन खरीदता क्या कौन होगा आईडी में, कोई जानना है कौन खरीदता होगा आईडी खरीदते भी हैं ओवरवॉच में लोग, मेरे को लगता है खुद से बिल्ड करते होंगे, या तो ऑपरेटिव खोल के देते होंगे सारे, इसलिए तुम लाइक उसमें खरीद लेते होंगे लोग। बाकी वैलोरेंट में जैसे तुम अगर रेडिएंट वाली आईडी बेचोगे तो बेचती हैं, डायमंड वाली आईडी बेचती हैं, तो वहाँ पर रैंक के बेसिस पे बेचती हैं। यहाँ पे किसके बेसिस पे बेचती हैं एलिमेंटलेस? हेलो रेंजर, वेलकम टू द स्ट्रीम। आ गए रेंजर हैं, आ गए रेंजर हैं, खुल गई नींद तुम्हारी, मिल गई दिल को ठंडा की स्ट्रीम पे आके। Order! Order, I say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even after knowing what you do now? You certainly have more professionalism than I thought. In that case, my dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. बहुत लेट, हाँ भरे पड़े हैं बैलों में, कंपटीशन ज़्यादा है इसमें, नहीं तो इसलिए एक्सपेंसिव है अभी। बहुत लेते हैं पर भरे पड़े हैं, वैलों में कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें नहीं है तो इसलिए एक्सपेंसिव है अभी। ऐसा है क्या? मेरे को लगता है ओवरवॉच 2 काफ़ी खेलते हैं लोग। डैम, आई स्टिल डिडंट डू द आर्कॉन क्वेस्ट। कोई बात नहीं रेंजर, अपने में स्किप कर लेना ये वाले पार्ट्स। थैंक्स नाइटबॉट फॉर टेलिंग मी आई एम इन अ लाइव स्ट्रीम एंड इट्स गोना बी सो मच स्पॉयलर्स स्ट्रीम। सो अरे तो रेंजर अपने जब गेम खोलोगे करने जाओगे तो तुमको कम टाइम लगेगा पता है स्टोरी करने में, अगर तुम स्ट्रीम पे देख लोगे वही चीज़ें तो करते हुए।
एंड इंजॉय कर दोगे स्ट्रीम पे एक्चुअली। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लाइक स्ट्रीम पे कर लो, स्ट्रीम पे आवाज़ भी आ रही है गेम की सही से एंड देखने में मज़ा आ रहा है। तो वहाँ जाके कट सीन जो आते हैं वो वाले क्या कहते हैं जिसमें स्किप नहीं कर सकते, वो इन्जॉय करो, बाकी सब स्किप करते जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको एक एक कट सीन दिख रहा है ना, एक एक चीज़ें पढ़ने मिल रही हैं। तो वहाँ पे अपने गेम में स्किप करो, मतलब टाइम बचेगा तुम्हारा, क्योंकि वैसे ही लंबा है बहुत। Well, this is awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. अभी तक नहीं करी थी स्टोरी, अभी तो चालू किया हमने आज। देवांश अभी तक करी के क्या मतलब होता है? Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. We based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. 50 मैच जीतने होते हैं रैंक ओपन करने के लिए, तो वो ओपन करके सेल करने के पैसे मिलते हैं। ओह अच्छा ऐसा है क्या? जीतने थोड़ी पड़ते हैं, 50 मैच खेलने पड़ते होंगे एलिमेंटलेस, 50 जीतने थोड़ी पड़ते होंगे। 50 जीतना बहुत बहुत दिमाग का काम मतलब माथापच्ची का काम होता है, क्योंकि वैसे ही ओवरवॉच में कुछ भी चलता रहता है और बहुत आरएनजी रहती है ओवरवॉच में, तो एक्यूरेसी की भी बात होती है। तो इसी वजह से मेरे को लगता है ओवरवॉच में 50 मैच जीतना बड़ी बात है। वो क्या कहते हैं 50 मैच खेलना होता होगा, जीतना नहीं होते होंगे। आई एम स्पीड प्रो स्मॉल अकाउंट में लाइक 22 बीस ग्राइंड किया आज। किसके लिए लेकिन रेंजर? Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad! I'm very sorry. I know you're angry, and reasonably so, but please, let me explain. I know you've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised if just hearing the word is enough to make you upset. But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. Chasm World Quest, Inazuma Full Archon Quest from start, Ayaka Niyoimi Story Quest and 12 Side World Quest. लेकिन किसके लिए ग्राइंड कर रहे हो? रेंजर आई एम सो लेजी आई डिडंट इवन डू डेलीज फॉर 3 days इन माय अल्ट अकाउंट। लेनेट की स्कर्ट बहुत छोटी है। यही दिख रहा है काय तुमको है? नहीं जीतने पड़ते हैं तभी तो इतना पैसा मिलता है। सोलो पे हार्ड है, 3-4 बंदे लेकर जाओ तो आराम से हो जाए। नहीं लेकिन सामने वाली टीम भी तो अच्छी आ सकती है, तो ऐसा नहीं है एलिमेंटली। लेकिन सही है अगर जीतने पड़ते हैं और उसके मिल रहा है तो फिर सही है आई गेस। 50 मैचेस जीतना और वो भी टीम के साथ इज़ वे इजी। मतलब सोलो में करना एक्चुअली डिफिकल्ट है ये चीज़ें एलिमेंटलेस। तो मेरे को लगा खेलने पड़ते होंगे। I knew if it weren't for our respective identities, we could become good friends. वो भी एक मैच बहुत लंबा जाता है आई गेस। डिफरेंट टाइप के गेम मोड्स होते हैं ना उसमें गेम में। That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, but being completely transparent about everything would see us spending more effort than we need to. But how can we know this is all just another lie? Right. So, you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. You met a Fatus who works as a magician, a trickster by trade. All by coincidence, too. But still, I'm asking you to trust me. I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Where did you actually go while trick was being performed? Right. Let's hear your answer first, and no lies now! मैंने 3-4 बार रिडीम कर दिया, पॉइंट्स कम हो गए हैं। ऑब्वियसली कम हो गए हैं काय? रिडीम करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box swap trick with the objective of getting close to the core. Is that why you needed a whole minute? That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box.
So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. And what did you find? एक सेकंड, मैंने तीन चार बुरा लगा राइडन या मीको आयाका थोमा काजा कोकोमी अदर सब गए टाटा बाय बाय एंड पता नहीं कब वापस देखने को मिलेंगे। डिफरेंट गेम मोड की वजह से बोरिंग नहीं लगता है, इट्स अ प्लस पॉइंट। डेड आइलैंड 2 क्रैक पे खेलते या बाई की थी? क्रैक पे खेल रहे थे हम लोग एलिमेंटलेस। तुम भी खेल सकते रहे हमारे साथ, तीन बंदे खेल सकते रहे एक टाइम पे, लेकिन अब हम लोग ने फिनिश कर दी पूरी स्टोरी डेड आइलैंड 2 की। रॉकेट लीग खेलो सुझा भाई, रॉकेट लीग बहुत खेली है काहे, बहुत ट्राई हार्डर्स आते हैं रॉकेट लीग में, मज़ा नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट। ये फॉल गाइज खेल लो उसमें, हाँ फॉल गाइज हम खेल सकते हैं काहे, फॉल गाइज खेल सकते हैं हमारे पास फॉल गाइज। मेरे को भी 2 अल्ट अकाउंट पे है। व्हाट इज, अच्छा रॉकेट लीग खेल के, रॉकेट लीग में बहुत ट्राई हार्डर्स आते हैं भाई, मैंने देखा है कैसे कैसे ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं वो लोग, अलग ही लेवल की ट्रिक्स रहती है। हम भाई बॉल ही नहीं छू पाएंगे पूरे गेम में, ऐसा लगेगा। हमारे साथ लिटरली एक बार हुआ है, पूरे गेम में बॉल नहीं छूने मिली थी हमको भाई। अराना एंड डेजर्ट वर्ल्ड क्वेस्ट एंड होल नहीदा आर्कॉन क्वेस्ट। अब मुझे कोई फ्रेंड ढूंढना है। फॉल गाइज फ्री में नहीं मिल रही, फ्री में है एपिक गेम्स में। अभी मैंने परचेज की थी उस टाइम जब फॉल गाइज रिलीज हुई थी, उस टाइम खेली थी मैंने। कहा है यू कैन चेक आउट माई वीडियो जिसमें मैं फॉल गाइज में गेम जीता था, सबसे पहला गेम। बहुत ट्राई हार्डर रहते हैं फॉल गाइज में, सच्ची बता रहा हूँ लोग। वीडियो पड़ी हुई है उसमें चैनल पे, जाके देख सकते हो, खेली है मैंने फॉल गाइज। Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. अकेले थोड़ी खेलूंगा मैं फॉल गाइज अकेले खेलने में मजा थोड़ी आता है। Well, that explains why you didn't hear the thud. Really elementless? I mean, obviously तुमको स्किल सेट चाहिए होता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद रॉकेट लीग में, तो इसलिए हार्ड हो सकता है रैंक पुश ऑब्वियसली रॉकेट लीग का। लेकिन दे गेव आउट लाइक सो मच फ्रीवीज यू नो स्किन्स के फॉर्म में रॉकेट लीग में, मेरे को ऐसा लगता है। अरे ना कोई तो बिल्कुल नहीं करना चाहता आदमी। वैसे कल परसों तक एयर 50 हो जाऊंगा। अरे नाइस रेंजर। But would you want to understand how AREY operates? Because of that prophecy I told you about, of course. We must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it. The whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But, like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. भाई ये लोग मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। लेनी एंड लेनेट एक्चुअली वो हैं फटुईज हैं, एंड दे आर द रोबोट्स क्रिएटेड बाय डॉक्टर आई गेस। मेरा हो गया AR 50 4-5 दिन पहले ही। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल का। अब तुम्हारे भी आर्टिफैक्ट अच्छे ड्रॉप होंगे, डबल ड्रॉप होंगे, और काफी चीजें इंप्रूव हो चुकी हैं, बॉस का लेवल इंक्रीज हो चुका है, अब तो मजा आएगा गेम में। वाह रेंजर, तो तुमको एलान चलाने में इतना मजा आ रहा है कि तुमने इतना सारा स्टोरी क्वेस्ट खत्म कर दिया है रेंजर। स्टम्बल गाइज नहीं खेल सकता एलिमेंटलेस, मेरे पास नहीं है कोई भी सिस्टम टू रेप्लिकेट फोन इनटू द पीसी। अगर मैं कर भी लिया तो साउंड नहीं आएगी तुमको फोन की, तो यही प्रॉब्लम है एलिमेंटलेस।
क्या नो रोबोट्स देवांश? दे आर द रोबोट्स। उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां पे जाके पढ़ सकते हो, जहाँ पे उनका ड्रिप मार्केटिंग हुई थी उसमें सबसे लास्ट लाइन ही लिखी हुई है, स्पेशली लेनेट के लिए और जो उसका क्या नाम था सिस्टर का, फर्मिनेट करके, उनके लिए लाइन लिखी हुई है, दे आर द रोबोट्स। लैनी के लिए केस में हम नहीं कह सकते टू बी ऑनेस्ट, बट बाकी दो के केस में है वो लोग रोबोट्स। और इधर वी कैन प्ले क्या नाम है उसका, फॉल गाइज बोल रहा हूँ, क्या नाम है बे उसका, वो जिसमें अजीब से लहराते रहते हैं बंदे, चीजें उठा उठा के लगनी होती है, कोऑप में नाम भूल गया मैं उसका। स्टीम पे अवेलेबल है रियली? एलिमेंट लिस्ट चेकआउट करूंगा फिर मैं, मेरे को डिस्कॉर्ड में पिंग कर दो ये सब नाम। हाँ, ह्यूमन फॉल फ्लैट, आई कैन प्ले दैट एज वेल, बट ढूंढना पड़ेगा मुझे ह्यूमन फॉल फ्लैट का क्रैक फाइल, जिससे लाइक कि हम लोग आपस में खेल सकें, यू नो। मैं परचेज नहीं करूंगा ह्यूमन फॉल फ्लैट क्योंकि महंगी होगी गेम वैसे भी। आई बिलीव इन फैक्ट्स। ये क्या चल रहा है सुबह से? हु इज कमिंग बिटवीन अस? हाँ नहीं लेगी इसलिए ह्यूमन फॉल फ्लैट, इससे अच्छा मैं क्रैक डाउनलोड करके खेल लेगा ह्यूमन फॉल फ्लैट। I will defend you from these charges. Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. Co-op वाले मिल जाएंगे, If we want एलिमेंटलेस to कोई defeat दिक्कत the नहीं है। Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Actually, we already have the key of evidence we need. The adjournment almost over. Let's go back. Oh, Paimon thinks she gets what you mean. हाँ एलिमेंट लिस्ट दूंगा मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देता हूँ, अगर कोई भी क्रैक मिलता है अच्छा तो मैं शेयर कर देता हूँ। कोऑप मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा, जिसको खेलना है वो आ सकता है ऑब्वियसली डाउनलोड करके। पता नहीं मोबाइल में है कि नहीं है ह्यूमन फॉल फ्लैट, और पीसी वालों के साथ खेल पाएंगे कि नहीं, सो वो देखना पड़ेगा मोबाइल वालों को। आई कैन डू दैट। Both parties have returned to their positions. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then, if everyone would lend me their attention. At this stage, let's revisit that scene from Linney's perspective. Based on the opposition's account of events, you can identify loopholes in their statement. Use evidence and clues obtained during the investigation to refute any erroneous assertions of fact and replace them with new interference. Use your refutation and to convince the audience and obtain more support from your people, or a trials will display such shift clearly. When you find the refute all incorrect contents, you can complete the cycle of refutation and unveil the truth. ये क्या चालू हो गया बे? As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an... He did not realize that the sound could be heard by everyone in the opera house, which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out, before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange noise, and caught Linney red-handed. So Linney proceeded to knock him afterward. Linney passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident.
ये क्या चालू हो गया? हाँ पता है मुझे 2 बज गया, लेकिन ये खत्म करना पड़ेगा ना कट सीन, तभी तो गेम ऑफ करके सो पाऊंगा मैं, काया नहीं तो नहीं सो पाऊंगा। And there you have it. That's the truth behind what happened. तो जब अगर आपको टाइम मिले तो डायलॉग से बाहर आना है तो बंद कर देना, वरना 1-2 आवर तक बाहर नहीं आ पाओगे। हाँ मैं करूँगा, वही करूँगा अभी, रुको। And there you have it, the truth behind that happened. Does the defendant's side have any objection? The key to refuting Lady Farina is the order of events. What Linny experienced and what he saw. I guess सबसे पहला ये है evidence. Identify the loophole. Lenny claims that he headed to the chamber of containing authorized core upon entering the tunnel and did not witness the crime taking place and thus not hear the third sound. According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He couldn't have had that altercation with Halsey. मैं तो कहता हूँ 24 आवर स्ट्रीम कर दो लोल ना भाई, काहे इस घर पे हूँ, नहीं करने देंगे घर वाले, बाहर होते तो कर देता मैं। वैसे इसमें मर्डर का दिखाया didn't expect that. I know elementless. It is the story is getting dark actually. Yo AS, welcome to the stream. And यहाँ पे Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual इसमें लूपहोल क्या हो सकता है? Linny did not take part in the underground altercation. He only witnessed traces of the aftermath. Attention! Ace Detective Paimon has something to say! Not darker than her. Who? Ranger. Who is the most darkest here? Tell me. When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. But he immediately By the way, Ranger आज thumbnail कैसा लग रहा है? Opera House basement, बेकार लग रहा है, अच्छा लग रहा है? which is where the underground core of the Oratrice is stored. Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Not who ask what is a fill in the blank. That's what I'm asking. What is in the fill in the blanks? Leonard's leggings are the most darkest thing I saw today. I guess रेंजर तुम्हारा आंसर कर दिया काय ने। वैसे तो मैजिक सो के सीन पे आरिजिनो का इंतजार कर रहा था, सबको इंतजार था, एलिमेंटलिस बता ही नहीं, वो धोखा दे गई। आई गेस वही है इन सब के पीछे, मेरे को ऐसा लगता है। एंड बाय द वे गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक स्ट्रीम को लाइक कर दो यार स्ट्रीम को, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम बनाया है कर दो जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक। Finally, he reached the surface, and that was when the accident happened from his point of view. अरे मैं मतलब जिसने नहीं किया उसकी बात कर रहा हूँ, का है? Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Wasn't it awesome? पाइमन के गाल देख रहे हो, हो गए, शर्मा रही है। You believe that he knew nothing of the incident? That's right! Moreover, I believe my opposition's reason is flawed. My reasoning? The on-stage equipment was clearly tampered with in premeditation fashion. If that's the case, then if Carol hadn't entered the tunnel, who was the entire setup meant
to kill. Assuming that what you say is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you tell them! And that's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Oh, well, your denial is very strident, I'll give you that. But what proof do you have to back your claim? Do you happen to remember? Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? Your claim has now become my weapon. Yeah, I was just telling lol. Thumbnail थोड़ा new है. आज अच्छा hope to see more new styles. But Ranger वो लोग click नहीं कर रहे thumbnail. दिक्कत यही हो रही है. हम नया बनवाए थे इसलिए आज कि थोड़ा different style करते हैं. Daily same रखते हैं तो बोर हो जाता है आदमी. तो different करवाया आज. लेकिन लोग click नहीं कर रहे Ranger. फुरीना ज़्यादा cool बन रही है. I know काय ज़्यादा मनी मन खुश हो रही है ट्रैवलर को हरा के. पता नहीं क्यों. But background need more attention. What do you mean by background need more attention, Ranger? There is one thing missing over here. बाकी सब जगह fill हो चुकी हैं. Sure we don't need to give this more thought? Are you sure we don't need to give this... That's right! Lenny wasn't in the box or in the tunnel. That's why he didn't hear anything strange during the performance. बड़ा अजीब सी है यार ड्रॉर कौन यहाँ पे. This means that when the crime happened, Lenny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को अभी पता है डाइजेस्ट नहीं हो रही बात कि लेनी और लेनेट एक्चुअली फटुईज हैं and they are not in they are the fatuis but they are not in ranks of fatuis somehow and I guess Lenet and उसका जो भाई Ferminet है are created by Doctor because Doctor is the only person जो कि mechanical creature या फिर ये सब बना सकता है लोगों पे experiment करना पसंद करता है so I still can't believe it they are fatuis right now. ब्रो बस साइड में ही तो किया कैरेक्टर को बैकग्राउंड थोड़ा दिखा के कुछ 2-3 कैरेक्टर डालो कभी और वो सब सुबह प्लेस सूझा प्लेस का थोड़ा सा छोटा क्योंकि वो सारा कवर कर रहा है बाकी ठीक है. नोटेड रेंजर. फ्रैगर हो स्ट्रीम पे कि चले गए. नोटेड रेंजर. To think you'd use such logic. I guess Furina की multiple personality है. If it wasn't Lenny who committed the crimes, then who was it? The murderer was. Select the gear icon to interface to check corresponding case questions. Select answers and fill in the empty gears to verify the correctness of your deduction. If Lenny is no longer under suspicion, only other member of the troop would have been able to tamper with the props. Wait, यहाँ पे ये लोग मेरे को समझ नहीं रहा ट्रैवलर को आवाज क्यों नहीं देते भाई. कितना गंदा लग रहा है. आवाज नहीं है तो. Lenny gave the detailed account to how tricks are supposed to work by the box inside out. The idea box containing audience member to be transported across by a tunnel underneath. Lenny himself would also use the tunnel to get to the other side. Having changed her cloth, Lenny and her assistant would take charge of on-stage interaction. Clothes belonging to Hasley and the lady who went missing were found in tunnel. The reason for this remains unknown.
Could there have been a third person involved? Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or... Wait, तो कॉवेल का ही करा था जो The करना था. deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. नेवलेट को बना देते हैं फुरीना की मार ली लोल. I think फुरीना is possessed. क्या हाइड्रोर कौन बनेगी रे? ये मार्केट में नहीं आई है, ट्रैवलर को हल्के में ले रही है. एग्जैक्टली एलिमेंटलेस. That can't be right. Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. For I What also I think must do about next is in every time recreate the traveler truth. have his and her What voice in Cowell this did cutscene too. and how he Sometimes went आती है, from कभी कभी would-be नहीं आती है. कुछ perpetrator पता to नहीं क्या victim. क्या बजट है इनका ट्रैवलर के रिलेटेड. मेरे को समझ में नहीं आता का है. जबकि मेन कैरेक्टर है ट्रैवलर तो इस गेम में उसको आवाज ही नहीं दी और कभी कभार आती कभी कभार नहीं आती ट्रैवलर की. मेरे को समझ में नहीं आता का है कि चल क्या रहा है ट्रैवलर के साथ. How can we envisage Lennon as having unable to interfere with crime? No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? Halsey's clothing was in the tunnel. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Lenny was not in the tunnel at that moment. It would have been tough for both people to fit into देखो that अभी यहाँ पे vent. आ रही है ट्रैवलर की आवाज. They सुन would रहे हो likely काय? have bumped ट्रैवलर की into आवाज आ Lenny रही as है. well. ट्रैवलर की आवाज आ रही है. देख रहे हो, सुन रहे हो तुम? ये कितना अजीब गेम है बे. ट्रैवलर की आवाज आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही थी ट्रैवलर की. ये क्या चल रहा है? कैसा बजट है इनका ट्रैवलर से रिलेटेड? No one entered or left the opera. The deceased's name is Cowell. Halsey's clothing was in the tunnel. The sound we heard may have... Halsey's clothing was in... It would have been tough for both... Lenny was not in the tunnel. Hypothesis incorrect. What? Lenny was not in the tunnel at that... ये चल क्या रहा है? The sound we heard may... The deceased's name is Cow... The sound we heard may have come from... No one entered or left the... It would have been tough for both people to fit into that vent. अच्छा, लास्ट वाला गलत है हमारा. No one entered or left the opera house through its entrances. Halsey's clothing was... No one entered or left... ट्रैवलर नोएडा के अलावा किसी को मुंह नहीं लगाता. ट्रैवलर मन की में बातें करती है खुद से तो आती है. सेल्फ टॉक कर रही है वो. ऊपर देखो जो राइट में है, मैं हैंग ब्लू और ब्लू रॉन्ग रेड. हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो सिलेक्ट करने के बाद ही आ रहा है ऑप्शन, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है टू टेल कि क्या चल रहा है. Lenny was not in tunnel. According to the guardian's testimony, no one entered or left the opera house. So even if he had taken her, exiting from the box would have been full view of audience. Pretty much guaranteed that would destroy them. Traveler? Are you still having trouble figuring things Where out? the world did Halsey go? I see how it is. So this was all just a bluff. And here I thought you had something to show for it. But it seems you're still far from the truth. Look, since we're at a dead end, why not consider a different track? Just like the trick as it transpired, the end result must have been utterly different from the magician's initial design. If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel
has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Escaping from the water tank. Wait, could it have been the water? Excuse my interruption, dear Wait, water का क्या opponents, लेना देना but इससे? do you not see that the crowd is growing impatient? There is no greater sin in this opera house than an awkward delay in the performance. If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Hold on a second. Traveler Lenny बोल was ले not कुछ. in the tunnel at that moment, which gave our फिर चालू criminal हो गया ample इनका ये. time. मैं तो अभी फोकस किया हूँ. Lumine skin is too good than Aether lol, but Aether looks more hero type than her. क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो Lumine भी दिखती है hero type. Aether is cool as fuck. क्या कर रहे हो सुजा भाई? ट्रायल हरवाने रहे हो? नहीं रे, The ट्रायल sound हरवा. we heard may have come from a clash. The deceased's name is Cowell. The vase was not broken by chance. It was used to cover important evidence. The water. Paimon gets it! अरे कर दिया गाइस, पहले ट्राई में कर दिया. किसने बोला मेरे को? थोड़ा ऊपर नीचे होता है गाइस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे Lynette चलता escaped है. from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. क्या लिख रहे हो? Well, I think I should go back and do some more story quest. I don't feel sleepy. You almost leaving, right? So see you tomorrow. I still have some time. Ranger खत्म तो होने दो. Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here. I request we examine not some Cowell's personal magic effects. trick. Personal effects. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knew magic tricks are ultimately just illusions and misdirection. But Halsey's disappearance is very real. We're talking about 2 completely different things. Even so, I trust the traveler's judgment. The truth must be out there somewhere. Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? अच्छी तो लग रही है पायमन, क्या बात कर रहा है? People really do come up with all sorts of harebrained schemes when at the end of their rope. The way I see it, your suggestion that we broaden the scope of our investigation is nothing but a tactic for stalling the trial. Nevertheless, I believe that this is a reasonable request on the part of an attorney. Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that additional evidence may help us make more progress. Guards, please step into the lounge and examine the personal effects of the deceased, Cowell. We are still examining the items, but क्या we have news लग already रही है? made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. We discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. Water from primordial sea. Primordial sea. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject. Wait. Nobility is more like a hydro icon, not gonna lie. Yes. To be honest, उसका outfit ना उसका look बहुत सही है Nobility का, मेरे को ऐसा लगता है.
थोड़ी अजीब सी है हाइड्रोआर्कॉन ये वाली। एंड तुमने ये चीज सुनी, गेम में पता है ड्रग्स भी हैं। देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन द गेम जो कि ड्रग्स सेल करती है, समझ रहे हो तुम मतलब? As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? Huh. If people can become water, does that mean that the water tank's real use was as a means to hide water stains? And if Cowl was targeting that girl... Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Wait a second. So, उसने गर्ल को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, इट सीम्स लाइक। कितने की पेटी है कोकेन की, मैं भी लूंगा। गार्ड्स अरेस्ट करो एक आय को। ये आई गेस इसने लड़की को डिसॉल्व कर दिया पानी में उसके थ्रू, प्रोमोडियल सी के थ्रू, आई गेस प्रोफेसी के हिसाब से। Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. Mr. Linney, it appears your hypothesis is supported by the evidence, so please continue speaking. I am a Knight of Favonius, bhai, you can't arrest me, but there is no law against, you know, there is no favoritism against the Knights of Favonius here in Fontaine, Kai, so you might get arrested for this. Of course. Thank you, Your Honor. If we uphold this hypothesis, I believe that many of this case's seemingly unrelated clues can be connected together. Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Water from primordial sea. The rope that strung the water tank up was lit by the fireworks and cut. As such, the focus here is on the water and not the tank. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the will kill equipment. every guard. Boom boom बकुड़ा. Wait, लेकिन काय water के अंदर थोड़ी bomb work करते हैं. How can Klee can kill somebody who is in water, Kai? Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. The water from the primordial sea should already have been prepped before Halsey entered the magic box. What item did culprit use to dissolve Ashley? Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? I remember there was something else within the inner layer of that box. पहला वाला गलत है. The deceased's name is It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey.
Afterward, Cowl would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. Wait, guys, तुमने नोटिस की एक चीज? देखा मेरी हाइपोथेसिस सही थी. Primordial sea can dissolve any person into the water, and that's what happened. उसने जब primordial water को use किया, तो the person who was inside the box was get dissolved into the water. That means वो water में convert हो गई वो लड़की, पता उसी time instantly पता melt हो गई. Can you believe that? देखा तुमने exact same था मेरा hypothesis. Huh, that does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Chats नहीं जा रही हैं थी, अब ठीक हो गया. हो सकता है इशू हो गया होगा बीच में. मुझे भी जाना है उस वाटर में भाई. काय फिर तुम्हारा एग्जिस्टेंस चले जाएगा, क्या फायदा पानी उस वाटर में जाने का. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation. On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved in this case. And we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal effects. What? Wait, what? So Lenny वापस से फंस गया. That one who truly 100% looks like an Archon is Raiden. True actually, Kai, true. That can't Because be. she is a ruler na, Kai. मैं तो नैडा को भी पहली बार देख के शॉक हुआ था एज आर्कॉन. अच्छा है, जी के भी क्या फायदा है? क्यों जी के क्यों फायदा नहीं है काय? प्लॉट ट्विस्ट हो गया गाइस, प्लॉट ट्विस्ट आ गया गेम में. एंजॉय करो अभी कट से. Wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. लेकिन राइडन क्यों बेस्ट नहीं लगती तेरे को एलिमेंटलेस? राइडन तो अब अच्छी हो गई ना, खुशी खुशी रहती है, प्यार से बातें करती है. ऑल्दो उसको कुछ पता नहीं राइडन को, इसका मतलब थोड़ी कि वो बुद्धू है राइडन. उसको है तो वो भी अच्छी आर्कॉन ना राइडन भी. राइडन क्यों बेस्ट नहीं लगती तेरे को एलिमेंटलेस? Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowl then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his. Ultimately, he knocked Cowl out, and the tool meant to cover now, as much as I regret. Am I right? Mr. We've used up all the evidence we collected. Is this the end of... Oh no! Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. राइडन लेस्बियन है, इसलिए नहीं पसंद होगी. Seems using the water ये क्या बात हुई काय? evidence was too good a move. राइडन को लेस्बियन से क्या लेना देना है? This have to happen now. राइडन को लेस्बियन से लेना देना क्या है? ये मेरे को ये जानना है काय. I think we've all seen enough now.
And we have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the... Now then, my good, noble Chief Justice, should we not, in your view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. Miss, I must ask you not to shout, and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on, don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick, one that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please, do the honors, Mr. Linny, if you would be so kind. What in the world is she saying? No offense, miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? It often conceals the truth while presenting a fascinating illusion. But once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale to today's performance? Come on, Linny and Lynette, give it another go. Don't worry, Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But, as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I understand. And voila! Wait, what just happened? Wait, what just happened? Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? Wait, abhi So kya hua? the whole thing about Kinda people kehte hain? dissolving wasn't true after all? To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. Ye kya hua I abhi admit abhi? it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Linny was the one who caught me in the act. Hey, no wonder you look familiar. So you were the thief. I told you guys. I told you. I know this girl. This girl is from the dock जो चोरी कर रही थी. I told you guys. मेरे को पता था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. दाल में काला है यहाँ पे कुछ ना कुछ. Liddy even mentioned that you were pretty skilled. Well, and I thought that would have been the end of it, but then the number selector chose me. He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee, but then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. Can a person even hide in there? If they are practiced hand at concealment, probably. But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? Yeah, now it's time to refute the Hydroicon's previous This reasoning. time, we need to tell the entire story from Lillian's perspective. We are going to challenge now.
क्या है रिफ्यूट करने के लिए? The strange sound wasn't from a fight. It was Lily-Ann's attempt to break out when she was frightened. The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle. Lily-Ann was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. And it's Ace Detective Paimon time! मोन कर रही है. Having been selected out of the blue, Lily-Ann panicked. भाई काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी पता है. Even though it's going on as a मतलब सो एंड क्या कह सकते हैं डिटेक्टिव थिंगी, बट काफी इंटरेस्टिंग है स्टोरी. मतलब जो प्लॉट टर्न ट्विस्ट आ रहा है ना यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी. सच्ची बता रहा हूँ मैं. Intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the thud we all heard. Hearing the commotion, Cowl leapt into the tunnel, only to discover that Lily-Ann had not dissolved. He did not know that Lily-Ann was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect. He tried to force Lily-Ann back into the box. The two broke the flower vase during the struggle, but Lily-Ann came out on top, knocking Cowl out and putting him in the box. Yeah, exactly. पता है मुझे कहाँ है, लेकिन ये खत्म करना पड़ेगा ना With no way of escaping, she changed her clothes and hid in the costume trunk until the performance ended. भाई हर टाइम ये इक्वल क्यों रहता है, मेरे को ये जानना है. कभी हमारे साइड भी झुक जा भाई. हर टाइम मतलब हाइड्रोर में तरफ झुकेगा नहीं तो नहीं झुकेगा. गजब है ये. That she would have to go through guard inspection if she tried to leave afterward. So she has been trapped in the opera house these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in the tunnel have now come to light. Ah, so that's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? बहुत लंबा कट सीन है लेकिन मजा आ रहा है. Worth it है. Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that! She's like a deflated balloon now. If there are no objections, then as the Chief Justice of Fontaine, I shall once again repeat the full sequence of events. The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowl, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. पता है यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है there is more than one person involved. कॉबल मर गया लेकिन इसके एसोसिएट अभी भी जिंदा होंगे, तो they will try to take revenge on Traveler or maybe somebody else. To cover up any evidence while committing the deed, Cowl thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope suspending the water tank, using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop and hide the watermarks. He poured the water from the primordial sea into a balloon during the preparation of the magic box and stuck it to the box's lid. Finally, he passed the prepared hook on a rope through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to said box. When the magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lily-Ann was not from Fontaine, and thus fled the box with a loud noise. Realizing that there was trouble,
Cowell entered the tunnel and met Liliane. Thinking that the waters had not yet taken effect, he decided to proceed. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box, and thus became his own final victim. Liliane, according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. While there is much in Linny and Liliane's conduct that should still be investigated separately, this case, at least, can be handed over to the Oratrice to make the final decision. ये क्या हो रहा है? As such, Linny and Lynette are officially declared not guilty. Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. Let's not celebrate just yet. Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. भाई ये क्या चल रहा है? मतलब ये लोग लोगों को डिसॉल्व भी कर देते हैं पानी में. मतलब अलग ही लेवल का सीन है. And he is getting dissolved now. He turned into water. And now he can no longer talk. I guess he was injected with the dose. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. GG हो गया इसका तो lol, yes. An outrageous act. All present, please submit to inspection immediately. So, we're just going back now? The problem seems to be solved for now. We are not needed here anymore. That's true, but... Traveler, Paimon! Please wait. Linny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end. Even after you learned that I'm a member of the Fatui. I just didn't wait to see anyone falsely accused. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all.
That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. Wait, ये कोई नेव करके कोई फटुई है जो कि ये ऑर्फन था लेनी उसको अडॉप्ट किया था और फादर के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा है वर्ड ओटिटस करके कुछ. आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट. वेट, तो फटुई के अंदर कौन है? मतलब ये नेव नाम से, ये नेव नाम से कौन है? आई डोंट रिमेम्बर किसी फटुई का नाम नेव हो. A knave? भाई बहन है ना दोनों, इसलिए the house of the hearth? She's your father? She is your father. Wait. She is your father? Wait. She is she and as well as father. What do you mean यहाँ पे? मेरे को पता था guys ये लोग मैकेनिकल हैं. I knew it ये मैकेनिकल हैं. That's right. And since we're here, I was wondering, back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner. Exactly, तेरे को भी doubt we हो रहा है? began to perform magic tricks there. बोल रहा है ये. मतलब सी भी है और फादर भी है. ये क्या चल रहा है? To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic trick. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. Wait, तो इसकी बहन को सेल कर दिया गया था काय? सुन रहा है तू? मतलब according to लेनी, after performance इसकी जो sister थी लेनेट, उसको सेल कर दिया गया था किसी को. नहीं, ऑर्फन्स थे और किसी और ने बनाया लेकिन इनको रख लिया था एज अ चाइल्ड, you know. The answer he gave me was, she caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? मैं बोल रहा है का ये पता है फॉन्टेन ज्यादा डार्क है. मेरे को लगता था कि इनाजुमा डार्क है या सुमेरु डार्क है. ये मैं बता रहा हूँ, ये फॉन्टेन सबसे डार्क जगह है. Oh no. So he was gonna... But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster कितना लंबा कट सीन है. and they have their ways of escaping the eye of the law. So what happened after that? I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood. And the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. सुन रहा है तू का है? नेव ने जिस बंदे को मारा था उसके बेसमेंट में और लड़कियां थी जो कि ऑर्फन थी. समझ रहा है तू का है? देख रहा है कितना डार्क है स्टोरी. Father, I mean the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you.
Indeed, betrayal shall never be permitted here. मेरे को देखना पड़ेगा नेव कौन है, मेरे को खुद को नहीं पता का ये, मैं पहली बार सुन रहा हूँ. I don't remember actually कि जो टॉप फटुइज होते हैं, हार्वेंजर्स होते हैं, उनकी रैंक में कोई है नेव नाम से. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. The knave is after the Genosis, isn't she? She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis's power when she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The whole House of the Hearth is currently working to combat that crisis. Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. All of us house members here, Lady Arlecchino herself included, are from Fontaine. We won't give up on defending our homeland. Wait, ये Arlecchino नहीं है, Arlecchino है इसका pronunciation. What? नई नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं. Arlecchino नहीं है, Arlecchino है इसका pronunciation. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. But still, I can't still completely trust you. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny! मैं बंद कर रहा गाइस गेम को, बता रहा हूँ ये गेम ना डार्क होती जा रही है. मेरे को कल देखूंगा मैं डार्क इसका डार्कनेस, और डार्क एज फक. अभी ये आगे भी और भी ज़्यादा डार्क होगा टू बी ऑनेस्ट. मेरे को तो लग रहा है हम जब वहाँ पहुँचेंगे, क्या कहते हैं, सजनाया पहुँचेंगे, सजनाया में स्टोरी और कितनी डार्क होगी वे काहे. मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी फाउंटेन में इतनी डार्क हो गई है. ये देखो कुछ भी नहीं खुला है मेरा, ये देखो यही है बस जो है. ये दिख रहा है, ये देखो कुछ भी नहीं खुला है मेरा. पता नहीं क्या अचीवमेंट मिली है, देख लेते हैं एक बार. क्रूज, डिटेक्टिव इन एक्शन. नहीं है और कुछ यहाँ पे. नेटलैंड भी नहीं, डेटलैंड डार्क नहीं होगा. मेरे को लगता है सजनाया सबसे डार्क होगा, पता है, क्योंकि स्टोरी ही डार्क थी ने वहाँ की सजनाया की, वो नोवेल की. तूने सुना तो होगा का है आई गेस. चलो गाइस, दैट्स इट टुडे. थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन ऑन द स्ट्रीम. कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे आर्कॉन क्वेस्ट हम लोग स्ट्रीम पे. बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ गुड स्लीप, नेवर गेट अ गुड नाइट सभी को. कल मिलते हैं विथ आर्कॉन क्वेस्ट अगेन, एंड वी विल सी और ज़्यादा डार्कनेस इन द गेम अगर है तो. नहीं तो थोड़ा इवेंट करने की कोशिश भी करेंगे कल हम. ठीक है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट सभी को. कल मिलते हैं आप लोगों से, एंड गुड नाइट सभी को. एंड लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे.